Hello, everyone. This is your host for today, Shabina Hayat. I welcome you all on behalf of Teach Learning Dimension and Seek Aspire to Learn on this platform of Edunext International Conference 2023 with the theme of Education of Things. So, I am not going to take a lot of your time as I know that you have been waiting since some time now. So, let's welcome our first trainer of today, Fatima Muiz, and her topic is reactive versus proactive. Holding a proactive approach may be able to detect and resolve problems sooner. As a result of our initiative, we would gain confidence and success by our ongoing improvement mindset. On the other hand, a reactive approach frequently entails waiting for a problem to occur before devising methods to monitor and handle it. So let's welcome our today's first trainer, Fatima Muiz. Hi, Fatima. So now, stage is all yours. Thank you so much. Thank you so much. I'm good, Alhamdulillah, and hope you all are doing well. And thank you so much that you are here at the weekend. That's really appreciate that you all are here, find time for a learning weekend. Yes, appreciate it. Really Yeah. appreciate it. Walaikum assalam, everyone. So let's begin. I'm going to share a screen. Yes, is it visible to everyone? Okay, thank you. Thank you so much for prompt responses. Okay, so let's begin with the name of Almighty Allah, Bismillah Rahman Rahim. As my introduction, as you all know, my name is Fatma Muiz. My qualification is Masters in Biochemistry and PhD honors. I am a passionate learner, educationist, trainer, researcher, and a founder and director of an educational consultancy virtual organization named Embed, and find it on the Facebook page and Facebook group as well. As far as my education background is, I have been in the field of education for past 15 years and have served in a different positions in nationwide organization. Mostly I've served in the position of leadership and management along with the teaching. So teaching is my passion. I always enjoy it. Moreover, I'm certified trainer from the Teach and Seek, and today I'm here just because of that the opportunity Ms. Saima and Ms. Farah gave to me. Thank you so much. Currently, I'm working as an academic manager and trainer in an educational organization, and besides it, I'm mentoring the stuck teachers training program. This is also online. So this was a brief introduction of mine. So let's begin with the session objectives. What we are going to do in a very light mode, we discuss first of all, identify reactive and proactive behavior. As the title of today's session is reactive versus proactive. So we will find what are the behaviors and what are the differences. Analyze reactive and proactive behaviors in different real line situations, and we really enjoy it. Identify the characteristics of proactive leaders, teachers, and students. As the today's session are mostly for teachers, and we all are readers in our capacity. In the last, we will apply the proactive approach skills in our real life scenario. Okay, so first of all, नो आर सेल्फ, हम अपने आप को कितना बेहतर जानते हैं. हमारी लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस आती रहती हैं, ठीक है. कभी हमारी प्लानिंग होती है, कभी नहीं होती है, कभी कुछ सडन इंसिडेंट्स हो जाते हैं, कुछ इवेंट्स हो जाते हैं, ठीक है. तो डिफरेंट सिचुएशंस में हम किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअली हम किस कैटेगरी में आते हैं, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक्टिविटी करते हैं. यस, सोचे जरा. लेट्स थिंक, डू यू गेट often upset or annoyed in the situation you do not ready for. ऐसा होता है कि कोई अनसर्टेन सिचुएशन आ जाए या कोई ऐसी बात हो जिसके लिए हम रेडी ना हो, और हम उसमें क्या होते हैं, बहुत अपसेट हो जाते हैं, गुस्सा आता है हमें. कैसा आता है, क्या होता है? Yes,
Yes, sometimes. Yes. Yes, we become upset. Okay. गुस्सा आता है कभी कभार, ठीक है. अब सैड हो जाते हैं, मूड ऑफ हो जाता है, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, बिल्कुल. स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल. फिर क्या रिस्पॉन्स कैसे करते हैं? इमोशनल हो जाते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल. डू नॉट वांट टू टॉक टू एनीवन. ओ राइट, ठीक है. फिर इस सिचुएशन को डील कैसे करते हैं आप? डील भी तो करना है ना, फेस तो करनी है. सिचुएशन तो आ गई, क्या करेंगे? सोचेंगे, खामोशी से बैठेंगे कुछ देर, कुछ वक्त लेंगे, टेक अ डीप ब्रेथ, सोचेंगे, बिजी ऑन अदर थिंग्स, प्रूव आवरसेल्फ बाय डूइंग, हैंडल करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, डिस्कस विद समथिंग समवन वेरी गुड, कुछ न्यू कर लेते हैं, विद पेशेंस, शेयर विद फ्रेंड्स. ओहो, try to relax myself, try to regulate, give time to yourself. Very nice, very nice. Great, great. Okay, so mashallah, we have a great audience with prompt responses. एक और एक्टिविटी करते हैं, ठीक है. अभी आप सब ने अपना एनालाइज किया अपने मूड्स को कि आप इस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है. अच्छा, आई विल ट्राई टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग. ओके, वेरी नाइस. चलिए इमेजिन करें कि अगर आपके घर में अचानक मेहमान आ जाए, ठीक है, उन्होंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, तो और आप उस सिचुएशन में कुछ परेशान से हो गए हैं, बट आपको ऑब्वियसली मेहमान आए हैं तो आपको उन्हें होस्ट भी करना है, उनकी खातिर मदारत भी करनी है. क्या करेंगे इस सिचुएशन में? स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर हाई टी. यस, मेहमान तो रहमत होते हैं, बिल्कुल. क्लीनिंग, टीम वर्क, डिस्ट्रीब्यूट द वर्क इन होम. वेरी नाइस. वेलकम देम विद अ स्माइल. ग्रेट. फर्स्ट जूस. वेरी नाइस. ऑर्डर ऑनलाइन, ठीक है. स्टार्टर सर्व करेंगे, ठीक है. कुछ फ्रीजर को चेक करेंगे. वेरी नाइस, ब्रिलियंट, वेरी नाइस. ऑलवेज कीप सम फूड ऑन फ्रिज. वेरी नाइस. स्नैक्स देखेंगे, फूड ऑर्डर करेंगे. ग्रेट, ग्रेट रिस्पॉन्सेस फ्रॉम एवरीवन. ग्रेट. चलिए जी, अब थोड़ा सा देखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है. आई एम वेरी ग्लैड टू सी योर रिस्पॉन्सेस कि आपने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस शेयर किए. अच्छा, अब हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं, ठीक है. दो तरह के रिस्पॉन्सेस होंगे, राइट. या तो वो नाराज होंगे, गुस्सा होंगे, कंप्लेन करेंगे कि भाई आपने हमें क्यों नहीं बताया पहले से, हम कुछ आपके लिए अरेंज कर लेते. फूड ऑनलाइन करेंगे बेशक, बट ये आपको कॉस्टली भी हो सकता है, आपके बजट के ऊपर एक बर्डन हो सकता है, ठीक है. या अपने फैमिली मेंबर्स जो उस वक्त मौजूद होंगे उनके साथ एक डिस्प्यूट होगा, तुम जाओ बाजार, तुम फला चीज लेकर आओ, ये करो वो करो. या फिर ये भी हो सकता है कि उस वक्त घर में ऐसा कोई फैमिली मेंबर मौजूद ना हो और आपको घर में मेहमानों को छोड़कर खुद कुछ अरेंज करने के लिए जाना पड़े, ठीक है. हाँ, वेरी गुड. We feel happiness when guests come to our day. That's great, that's great, that's brilliant, ठीक है. अच्छा, अब दूसरे रिस्पॉन्सेस क्या है जो कि मोस्टली हमें रिसीव हुए? आई एम वेरी ग्लैड टू सी. वेलकम द गेस्ट प्रेजेंटली, ठीक है. और कुछ ने आपने रिस्पॉन्सेस दिए कि कुछ फ्रिज में देखेंगे कि जो प्रोसेस्ड फूड है या कुछ पहले से रॉ मटेरियल तैयार करके रखा हुआ है, फ्रोजन फूड निकालेंगे. या कुछ ड्राई आइटम्स हम हमेशा ऐसा घर में रखते हैं कि अगर कभी भी किसी भी वक्त अगर मेहमान आ गए तो उनको हम सर्व कर सकेंगे. वी मेक द लिस्ट. ओके, सर्व वाटर एंड टी. ओके, डिपेंड करता है कि मेहमान किस टाइम आए हैं, ठीक है. चाय का टाइम है तो हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे जो उनके टाइम के लिए यूज सर्विंग के लिए यूज हो, बट अगर कोई लंच टाइम है या डिनर टाइम है तो उसके लिए.
राइट। अब दो तरह के रेस्पॉन्सेज, जो पहले रेस्पॉन्सेज है वो है रिएक्टिव रेस्पॉन्स एंड द अदर वन इज प्रोएक्टिव रेस्पॉन्स, जो कि मोस्टली आप सबने शेयर किया। क्या समझ में आ रहा है इस चीज से? क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? जी, yes, the ultimate first thing to do in your situation, yes, stay calm and respond, shows reaction, very nice। ठीक है, अब हम फर्दर देखते हैं कि रिएक्टिव पीपल की सोच क्या होती है। हाँ, ये एक हमारा जो है ना, जो हम जिस तरह से एक्ट करते हैं वो एक पूरा मैकेनिज्म है। जिस तरह का डाटा इंफॉर्मेशन हमारा माइंड एक्सेप्ट करता है, जिस तरह की हमारी सोच होती है, हमारे इमोशंस भी उसी के अकॉर्डिंगली होते हैं, एंड अल्टरनेटली हमारे जो एक्शंस होते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। रिएक्टिव थिंकिंग क्या है? रिएक्टिव थिंकिंग बेसिकली फिक्स्ड माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करती है। यानी वो इंसान, वो लोग जो किसी भी वाकये या इंसिडेंट के होने का वेट करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करते हैं, या उनके इमोशंस दूसरों के रिस्पॉन्सेस के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो जो हमारा जो रिएक्टिव थिंकिंग जो रिफ्लेक्ट करती है बिहेवियर के तरफ, वो होती है कि एक ऐसी अनकंट्रोल्ड सिचुएशन या प्रॉब्लम जिसके ऊपर जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो दूसरों के रिस्पॉन्सेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, या जो दूसरे जिस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे या जो इवेंट जैसा होगा उसके अकॉर्डिंगली उनके एक्शंस होते हैं। तो वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स की तरफ। जी, फर्स्ट कंट्रोल ओवर सडन रिएक्शन इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट, बिल्कुल। जी, द वे हाउ वी डील विद सिचुएशन, एग्जैक्टली। ठीक। तो अब जब जो रिएक्टिव थिंकिंग होती है, रिएक्टिव बिहेवियर, वो वेट करता है कि या तो कुछ होगा तो हम करेंगे, या फिर ज्यादातर पास्ट एक्सपीरियंस जो उनके हो चुके होते हैं उस पर वो सोचते रहते हैं और रिएक्ट करते हैं। किसी ने आपके साथ आपको एक बहुत अच्छा सा तोहफा दिया तो आप बहुत खुश होंगे, या अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आप बहुत देर तक अपसेट रहेंगे। तो आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में होते हैं। किन की बात हो रही है? ये उन लोगों की जो रिएक्टिव थिंकिंग रखते हैं। किन सिचुएशंस में हो सकता है? ज्यादातर क्या होता है, हम ब्लेम करते हैं। मोस्टली आप सब ने जो रिस्पॉन्सेज दिए वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि आप सब माशाल्लाह से प्रोएक्टिव हैं, दैट्स वेरी अप्रिशिएटिंग। बट अगर रिएक्टिव पर्सन है, आप खुद नहीं है, आपके इर्द गिर्द लोग हैं, हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ऐसा अक्सर होता है कि कुछ लोग अपने फेलियर्स को, या कोई भी अगर उनका मूड खराब है तो वो दूसरों को ब्लेम करते हैं, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, फलां की वजह से आज मेरा दिन खराब हो गया, या मेरे एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं आए, पेपर बहुत मुश्किल था इसलिए मेरे नंबर अच्छे नहीं आए, या एग्जाम के दिनों में मैं बीमार पड़ गई थी, बीमार पड़ गया था तो मैं तैयारी ही नहीं कर सकी। होता है ऐसा कि हम दूसरों को ब्लेम करते हैं हमारे जो रिस्पॉन्सेज होते हैं लाइफ में, या जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जी, बिल्कुल करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है? जी, ऐसा होता है अक्सर कि कोई हमें क्रिटिसाइज कर देता है, हम वर्क प्लेस पर हैं, घर पर हैं, किसी ने बोल दिया भाई तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया था, या स्कूल में हेड ने बोला तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी। अब हम उसको सोच सोच के घंटों और बादों का दिनों तक अपसेट होते रहते हैं, गुस्सा आ रहा होता है हमें, क्यों हमें ऐसा क्यों बोल दिया, हमने तो इतनी मेहनत की थी, इतना अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई थी, इतना अच्छा खाना बनाया था, फिर भी हमारी तारीफ नहीं करी। तो उस फीलिंग, वो उनकी फीलिंग्स किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं? दूसरों के फीडबैक के ऊपर। जी बिल्कुल, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वाई मी। जी, विनिंग गेम, क्रिकेट मैच सभी को पसंद है और हम सब बहुत ही इमोशनल होते हैं, स्पेशली जब क्रिकेट मैच इंडिया के साथ हो रहा हो। क्या होता है, मैच जीत गए तो वो जश्न और सेलिब्रेशन जबरदस्त, बट अगर हार गए, ओ किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं नॉर्मली? बहुत गुस्सा आता है, ब्लेम करते हैं अपनी टीम के ऊपर, उसकी वजह से, उस प्लेयर की वजह से हार गए।
ओवर रिएक्ट करते हैं। हम अक्सर न्यूज में देख रहे होते हैं, या अगर हम पाकिस्तानी टीम जीत गई, ठीक है, और कोई दूसरी टीम हार गई है, तो वो तो बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा एक्सट्रीम उनके रिएक्शंस हम देख रहे होते हैं न्यूज में, ठीक है। जबकि हमें ये पता है कि स्पोर्ट्स है, गेम है, किसी ना किसी को तो हारना है और किसी ना किसी को जीतना है। बट अगर हम रिएक्टिव रिस्पॉन्स को रिफ्लेक्ट करेंगे तो हम हमेशा ब्लेम करेंगे दूसरों के ऊपर, फला की वजह से हारे हैं, फला अच्छा नहीं खेला। या अगर जीते हैं तो बस फिर तो सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है। मीन्स कि हमारे जो इमोशंस हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो दूसरों के कंट्रोल में है, बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स की कंट्रोल में। जी, कैप्टन को ब्लेम करते हैं, बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं प्रोएक्टिव थिंकिंग क्या होती है। जी, पहले से सोच लेना, पहले से खुद को तैयार कर लेना, और स्पेशली ग्रोथ माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करना। व्हाट इज ग्रोथ माइंडसेट, कैन एनीबॉडी शेयर? जी, पॉजिटिव ग्रोथ माइंडसेट रिफ्लेक्ट्स कि कोई भी इंडिविजुअल जो हर वक्त चैलेंजेस को या किसी भी चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहता है। पॉजिटिव, जी बिल्कुल, पॉजिटिव थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करता है, रेडी फॉर एवरी सिचुएशन। मेच्योरिटी, बिल्कुल, फ्लेक्सिबल होते हैं। मीन्स कि अगर कोई सडन चेंज आया है, लेट सपोज 3 साल पहले कोविड-19 ने पूरी दुनिया को परेशान किया, एक डिजास्टर आया, सबसे ज्यादा सफर किया उसमें एजुकेशन सेक्टर में। हम उसके लिए रेडी नहीं थे, वो एक सडन हमारे ऊपर एक सिचुएशन आई। बट जैसे जैसे कोविड फेज गुजरता गया तो हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती गई कि हमें क्या करना चाहिए। हमने ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस को फाइंड आउट किया। बहुत सारे स्कूल्स बंद हो गए और बहुत सौ ने ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट की, अपने टीचर्स को ट्रेन किया, अपने बच्चों को ट्रेन किया, पेरेंट्स को ट्रेन किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि नहीं अब तो जो है बस स्कूल बंद ही होंगे, हमारे पास तो और कोई चारा नहीं है। या बहुत सौ को एक फिक्स माइंड सेट था कि ऑनलाइन टीचिंग कभी भी वर्क नहीं कर सकती है, या ये सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पर ही वर्क कर सकती है, छोटे बच्चे नहीं कर सकते। बट आप सब ने ये कर दिखाया, और आज हम जो वर्चुअल ट्रेनिंग ले रहे हैं ये हमारी उस ग्रोथ माइंडसेट को रिफ्लेक्ट कर रही है कि नहीं, हमने तो अल्टरनेट सॉल्यूशंस निकाले, हमने खुद को स्किल किया, हमने डिजिटल लिटरेसी हासिल करी। तो हम कितना इफेक्टिवली आज इस ऑनलाइन ट्रेनिंग के थ्रू हम बेनिफिट्स हासिल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, बिहेवियर कैसे होते हैं प्रोएक्टिव थिंकिंग के? सबसे पहले फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। फ्यूचर के हवाले से उन्हें पता होता है, उनकी प्री प्लानिंग होती है कि नेक्स्ट आपके अपकमिंग डेज में क्या क्या इवेंट्स आने वाले हैं, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके अकॉर्डिंगली इनिशिएटिव्स लेते हैं। वेट नहीं करते कि कोई हमें इनवाइट करेगा, या हमारी हेड, अगर हम टीचर हैं, हमारी स्कूल हेड हमें टास्क देंगी, हम तभी करेंगे। बीइंग अ टीचर हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होती हैं, राइट। तो डिफरेंट सिचुएशंस में देखते हैं। सबसे पहले जो स्किल है प्रोएक्टिविटी की, वो ये कि प्रोएक्टिव पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो एक्सक्यूजेस नहीं करते, अपने सर्कमस्टेंसेस को जहन में रखते हैं, दूसरों के सर्कमस्टेंसेस को जहन में रखते हैं, और अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं। ऐसा होता है। कुछ लोग हैं, यकीनन आप में से बहुत से होंगे जो अपनी प्लानिंग करते होंगे, वेरी नाइस, किसी भी सिचुएशन के लिए हर वक्त रेडी रहते हैं। यस, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई टास्क एंड आई कैन डू इट। सो they have the number of list of responsibilities of the list of the tasks जिसको करने के लिए वो हर वक्त रेडी रहते हैं। जी, नेक्स्ट,
हमेशा इनिशिएटिव लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप टीचर हैं, आपके स्कूल में स्पोर्ट्स वीक होने वाला है, तो कुछ टीचर्स ऐसे होंगे जो वेट करेंगे कि हमें हमारे टास्क दिए जाएं कि हमें क्या करना है। कुछ ऐसे होंगे जो खुद ऑफर करेंगे, मैम आई कैन डू दिस वेल, आई वॉन्ट टू ऑफर माई सर्विसेज फॉर इट, आई लव टू डू दिस टास्क। ठीक है, या अगर आप कोऑर्डिनेटर हैं तो आपको पता है कि एक इवेंट होने वाला है, एग्जाम होने वाले हैं, तो मेरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मुझे कौन कौन से टास्क हैं जो मैं कर सकती हूँ, तो वो बगैर कहे तैयार कर लेते हैं। दे डू नॉट वेट फॉर द इंस्ट्रक्शंस, या कुछ ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस उनके माइंड में होते हैं, मैम अगर हम इस चीज को ऐसे कर लें तो ये ज्यादा बेहतर होगा, व्हाट डू यू थिंक? Yes, problem solving, initiatives. Yes, always complete your task at work. That's great. Oh, yes, teamwork. Yes. I'm very glad to see that I have a very proactive thinkers in the audience. Yes. Next क्या होता है? हमेशा बाहिम्मत होते हैं, मुस्तकिल मिजाज होते हैं। एक बहुत बड़ी वजह जो हम अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते वो क्या होती है? कमिटमेंट, नेगेटिव थिंकिंग, टाइम मैनेजमेंट। बिल्कुल। इसके साथ एक और बहुत बड़ी वजह ये होती है कि हम एक टास्क को कंप्लीट नहीं करते और दूसरे टास्क के लिए परेशान होने लगते हैं। हम चॉइसेस नहीं कर पाते कि नहीं हमें पहले क्या करना चाहिए, हमारी प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, तो जो प्रोएक्टिव थिंकर्स होते हैं वो अपनी चॉइसेस को जानते हैं कि व्हाट इज इन आवर कंट्रोल, व्हाट इज इन आवर चॉइस, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, मेरा फोकस क्या हो सकता है। नहीं, मैं ये कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, और मैं जब तक अपना ये टास्क कंप्लीट नहीं कर लूंगी या कर दूंगा, मैं आगे किसी नए काम में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, मुझे ये कंप्लीट करना है। आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, isn't? Yes. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि किसी भी सिचुएशन के लिए हम अपने आप को टाइम दें, सोचें। कोई सडन सिचुएशन हो गई है, एकदम से रिएक्ट कर देंगे, फौरन सोच लेंगे नहीं भाई ये तो हो ही नहीं सकता, या फिर सोचेंगे, सॉल्यूशंस को सोचेंगे, खुद को टाइम देंगे, खुद को काम और रिलैक्स रखेंगे। इस सिचुएशन में हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं, या कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, डिसीजन मेकिंग, थिंक अबाउट द ऑप्शंस, राइट। सेल्फ रियलाइजेशन, वेरी नाइस। तो इन सारी सिचुएशन से, चाहे हम प्रोफेशनल हो या अपनी पर्सनल लाइफ में हो, हमें इन स्किल्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना ही होता है, तभी हम अपने टास्क को कंप्लीट कर पाते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। आई एम ट्राइंग टू स्विच माय स्लाइड। यस, यस, चलें और देखते हैं, कुछ और आइडेंटिफाई करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि रिएक्टिव रिस्पॉन्सेज और बिहेवियर और प्रोएक्टिव रिस्पॉन्सेज में हम और किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देयर इज अ इमेज that is comprises of three circles. The inner circle, that is the smallest one. The middle circle, comparatively smaller than the first one. And the third circle is the biggest one. क्या कह रहे हैं ये सर्कल्स, हमें क्या बता रहे हैं? द फर्स्ट वन, अगर हम सर्कल को देखें, ये कुछ स्टेटमेंट्स हमें शो कर रहा है, माय थॉट्स, माय वर्ड्स, माय रिएक्शंस, जी, माय मूड। And the second is others people, others choice, my children's future,
where I work, my reputation. And the third one reflects death, traffic, sports match, the outcome of court cases in public transport is on time. क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है अगर हम रिएक्टिव और प्रोएक्टिव को जहन में रखें अपने? एनी आइडिया? कंफर्ट जोन, inner and self, yes. Okay, let's discuss. The first one, the circle, is the circle of control. The aspects of your life, the matters of your life, the things of your life that is directly in your control. And the second one is the circle of influence, that is somehow by focusing on that matters, you can control over it somehow. And the third, the biggest circle, is the circle of concern. The circle, the elements, the matters that are not in our control. तो अगर हम इन circles को consider करें, तो आप क्या समझते हैं? What do you think? कि कौन सा सर्कल है जो प्रोएक्टिव पीपल फोकस करेंगे जी, और कौन सा सर्कल है जो रिएक्टिव पीपल फोकस करेंगे? कंट्रोल योरसेल्फ. सेकंड, बीइंग प्रोएक्टिव. हमने ये जाना कि जो रिएक्टिव बिहेवियर होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है. मीन्स कि जो उनका फोकस है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, दूसरों के रिस्पॉन्सेज हैं. इनर सर्कल इज प्रोएक्टिव, वेरी गुड. रिएक्टिव विल बी सेकंड वन. ओके, proactive people looks for inner, yes. Comfort zone, the little bit control ourselves, बिल्कुल. जो प्रोएक्टिव थिंकिंग है, प्रोएक्टिव बिहेवियर है, वो फोकस करता है द फर्स्ट सर्कल, दैट इज सर्कल ऑफ कंट्रोल. वो एलिमेंट्स लाइफ जो डायरेक्टली आपके कंट्रोल में है. मैं क्या कर सकती हूँ? व्हाट कैन आई डू? हाउ कैन आई बिहेव? How can I manage my mood? How can I manage my behavior? How can I respond in different situations? It's all are in our control. But the reactive behavior, the reactive thinker focuses on the third circle, that is circle of control. Traffic. सुबह सुबह जब हम घर से निकलते हैं तो हमेशा ट्रैफिक हमें जैम मिलता है, या इवनिंग टाइम में हमें ट्रैफिक जैम मिलता है. क्या ये हमारे कंट्रोल में है? बट इसकी वजह से हम लेट भी हो जाते हैं. बिल्कुल हमारे कंट्रोल में नहीं है. हमारी जिंदगी और मौत हमारे कंट्रोल में नहीं है. वेदर हमारे कंट्रोल में नहीं है. बट क्या हमारा फोकस इस बात पर होता है कि सर्दियां हो जाएंगी तो स्कूल्स को ऑफ हो जाना चाहिए, या हम ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं? या अगर सर्दियां बहुत इस वक्त कराची में कोल्ड वेव्स हैं पिछले 3-4 दिनों से और एक्सपेक्टेड है कि मजीद 2-3 दिन रहेंगी, तो क्या हमने अपने लिए इस पर फोकस किया कि कब किस वक्त सर्दी हो जाए और तब हम अपनी हेल्थ की केयर करेंगे? जी बिल्कुल. वियर वार्म क्लोथ्स, एग्जैक्टली. ठीक. तो वो एलिमेंट्स जो हमारे कंट्रोल में है, हम उन पर फोकस करते हैं उस वक्त जब हम एक प्रोएक्टिव थिंकिंग के हामिल होते हैं. हम पहले से अपने लिए गर्म कपड़े अरेंज कर लेते हैं. हम पहले से कुछ मेडिसिन अपने घर में लाकर रख लेते हैं कि हमें पता है कि अगर हमें खुदा ना खास्ता बीमार हो गए तो हमारे पास मेडिसिन मौजूद होंगी. हम पहले से ड्राई फ्रूट्स लेने यूज कर लेते हैं. ऐसी डाइट अपनी ऐसी चीजें अपनी डाइट में रखते हैं कि जिनसे हम मुकाबला कर सकें ठंड का. ठीक. तो जो रिएक्टिव थिंकर्स हैं उनका फोकस उन चीजों की तरफ होता है जो उनके कंट्रोल में नहीं है, और वो वेट करते हैं सिचुएशंस का. Otherwise, the second one is somehow you have control over it. आपकी अपनी टीम के मेंबर्स के साथ रिलेशंस कैसे हैं? यकीनन ये हमारे ऊपर किसी हद तक कंट्रोल में है.
हम अगर अच्छा बिहेव करेंगे, हम अपनी अच्छे टर्म्स रखेंगे, बीइंग अ लीडर, हम एक पॉजिटिव बिहेवियर के साथ डील करेंगे, तो हम एक अच्छी टीम वर्क मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारे बच्चों के फ्यूचर के किसी हद तक हमारे कंट्रोल में होते हैं। क्यों? जब हम उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग कर रहे होते हैं, जब हम पहले से तैयार होते हैं उसके लिए। हमें पता है कि हमारे बच्चे अब नेक्स्ट ग्रेड में जाने वाले हैं, या मैट्रिक के बाद या ओ लेवल्स के बाद उन्हें अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाना है, तो उसके लिए हमें क्या प्रिपरेशन करनी है, राइट? ओके, दैट्स, यस, एग्जैक्टली। Thank you so much for your prompt responses. So let's have an interesting activity once again. एक सिनेरियो शेयर कर रही हूँ मैं, ठीक है? चाहे आप साइंस टीचर हो या ना हो, ठीक, एक सिनेरियो है कि एक साइंस लैब में बच्चे प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, लेट्स सपोज, राइट? और एक अचानक से कुछ पैनिक होता है लैब में, और टीचर को पता चलता है कि अच्छा भाई, कुछ बच्चे जो हैं वो ड्यूरिंग प्रैक्टिकल कुछ वो फन करने लगे, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करने लगे। तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि एक बच्चे के हाथ पर एसिड गिर गया थोड़ा सा, और उसकी शर्ट भी जल गई। तो अगर आप होंगे उस सिचुएशन में, बीइंग अ टीचर, आप क्या करेंगे? जी, being a teacher, what will be the outcomes of having reactive behavior and proactive behavior? अगर आप इमेजिन करें आप एक रिएक्टिव बिहेवियर वाले टीचर हैं, तो आपके रिस्पॉन्सेस क्या होंगे? और अगर एक प्रोएक्टिव थिंकिंग के टीचर हैं, तो आप क्या करेंगे? पैट्रिक लिंक आपके साथ शेयर हो गया होगा, होने वाला है। मैं चाहूंगी कि आप उसमें अपने रिस्पॉन्सेस शेयर करें, अदरवाइज आप चैट बॉक्स में भी अपने रिस्पॉन्सेस शेयर कर सकते हैं। जी, रिलैक्स होंगे, फर्स्ट एड, कंट्रोल योर इमोशंस, हैंडल सच सिचुएशन, राइट, इमीडिएटली कैटर द इफेक्टेड चाइल्ड, इमोशनल हो जाएंगे, सेव अनदर चाइल्ड, मेडिकल हेल्प, try to heal, calm the students first, पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे, काम रहेंगे, पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे। ओके, ठीक, वेरी नाइस। इन केस अगर रिएक्टिव टीचर है, तो क्या करेगा? वो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे? शाउट करना शुरू कर देंगे, बच्चों को डांटने लगेंगे, बिल्कुल, पनिश करेंगे बच्चों को, पेरेंट्स से कंप्लेन करेंगे, डांटेंगे, और ज्यादा पैनिक हो जाएंगे, पेरेंट्स को कंप्लेन करेंगे, कि उसके नतीजे में और क्या हो सकता है फिर? इन कॉन्सिक्वेंस पेरेंट्स से कंप्लेन कर दी कि अभी आपने बच्चे नहीं दिए किया, नो लैब फॉर 1 वीक। ओके, पेरेंट्स की कंप्लेन आ सकती है सिचुएशन में कि आपने ख्याल नहीं रखा बच्चों का, ठीक है? उसके रिजल्ट में आपको कुछ और डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी, आपके हेड आप पर नाराज होंगे। जी, और अगर प्रोएक्टिव अप्रोच होगी तो क्या होगा? सबसे पहले तो आप अपने लैब रूल्स को क्लियर करेंगे, लैब में जाने से पहले री इन्फोर्स करेंगे, मारेंगे, ओहो जी, फाइट करना शुरू कर देंगे, बिल्कुल। इसके बरक्स अगर रिएक्टिव थिंकर्स होंगे आप, तो रूल सेट करेंगे, क्लास में जाने से पहले रीइंफोर्स करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे कि व्हाट आर द रूल्स, व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस, ट्रेन करेंगे बच्चों को कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आपके साथ ड्यूरिंग प्रैक्टिकल्स होती है, तो आप कैसे हैंडल करेंगे। केमिस्ट्री के
प्रैक्टिकल के लिए ये बच्चों को बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल टीचर गाइड करना बहुत जरूरी है कि अगर खुदा ना खास्ता आपके हाथ में या कपड़ों पर एसिड गिर जाता है तो आप उस पर फौरन बेस डालेंगे ताकि वो रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो सके। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट एक्शन। तो ये आपने अवेयरनेस लैब में जाने से पहले, बच्चों के प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस से पहले आपने बच्चों को भी ट्रेन करना है कि अगर ये सिचुएशन हुई तो क्या होगा। फर्स्ट एड बॉक्स हमेशा रेडी रहेगा। काउंसलिंग करेंगे उन बच्चों की दैट लैब इज नॉट द प्लेस टू हैविंग फन, राइट। और मोर ओवर बीइंग प्रोएक्टिव, हमेशा अपनी गलतियों से सीखेंगे। हमेशा अपने बच्चों को तैयार करेंगे कि किसी भी सिचुएशन में अगर इंसिडेंट हो तो आपको पैनिक नहीं होना। फर्स्ट एड बॉक्स यहाँ रखा हुआ है, अगर कुछ कट गया तो ये मेडिसिन है, अगर हाथ जल गया तो ये मेडिसिन है। लैब कोट का हमेशा यूज करना है लैब में। यस, सीरियस एटीट्यूड, ट्रेन देम प्रॉपर्ली। ठीक है। तो प्रोएक्टिव टीचर हमेशा फ्यूचर इंसिडेंट्स को जहन में रखकर अपने खुद भी ट्रेन रहेगा, मेंटली प्रिपेयर रहेगा और अपने स्टूडेंट्स को भी ट्रेन करेगा। जबकि रिएक्टिव टीचर क्या करेगा, वेट करेगा कि जब कोई इंसिडेंट होगा तो फिर उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है। जबकि प्रोएक्टिव हमेशा से पहले से तैयार होगा किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए। लैंग्वेज, लैंग्वेज का हमारी जिंदगी में क्या रोल होता है जी। कुछ पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। ओके, चैट बॉक्स में शेयर कर रहे हैं, विल असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी जी। वाइटर रोल, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज शोज द पर्सनैलिटी। बिल्कुल जी। क्या लैंग्वेजेस से हमारी थिंकिंग पता चलती है, जैसे कि आपने शेयर किया कि पर्सनालिटी रिप्रेजेंट करती है। अब ये कुछ सेंटेंसेस, कुछ फ्रेजेस हैं, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? देयर इज नथिंग आई कैन डू, he or she makes me so sad, the teacher was not fair, फेल हो गई मैं, न मार्क्स मेरे कम आए, टीचर फेयर नहीं था, आई कांट डू इट, आई मस्ट, मुझे तो ये लाजमी करना ही करना है। नेगेटिव एटीट्यूड, yes, word expresses our thinking. Disappointment, negativity, right. So what do you think? These sentences reflect what type of personality, reactive or proactive? Reactive, yes. Reactive, very nice, brilliant. Now we have another type of language. Let's look at our alternatives. I can choose a different approach. I can control my own feelings. I can, I prefer, I will. क्या represent कर रहा है ये? Proactive, yes. So we have two type of languages as well. Reactive languages and proactive language. क्या इम्पैक्ट होता है लैंग्वेज का हमारी लाइफ में? अगर आप इन सेंटेंसेस को रिफ्लेक्ट करें तो जो सेंटेंसेस होते हैं हमारी वैसी ही फीलिंग्स हो जाती है। Reactive language causes you feel like you are powerless. You are not able to think to anything. You are not able to do complete your tasks. You are not able to face your challenges. On the other hand, by changing the proactive language, you acknowledge that you have the power to make choices and take control of your life. मोटिवेशनल स्पीकर्स का बहुत ट्रेंड है। क्या करते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स? क्या उनका हमारी पर्सनल लाइफ में कोई रोल होता है? वो सिर्फ अपने वर्ड्स से हमें इंस्पायर करते हैं। उनके मोटिवेशनल सेंटेंसेस हमें एनर्जी देते हैं, हमें बूस्ट अप करते हैं, हमें कॉन्फिडेंस देते हैं। तो यही मोटिवेशनल वर्ड्स जब हम खुद अपने आप से कहते हैं
तो ये हमें एनर्जी देता है, हमें कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं हम ये कर सकते हैं। अगर इसके बरअक्स हम पहले से ही ये सोच लें, अपने आप से कहना कर सके नहीं मैं तो ये कर ही नहीं सकती, मैं तो अपनी क्लास को कभी हैंडल कर ही नहीं सकती, या मुझे तो कभी कोई अचानक से टास्क मिल जाता है तो मुझसे तो कभी भी नहीं होता, मुझे तो हमेशा एक हफ्ता पहले बताया था। ठीक है, तो लैंग्वेजेस हमारी थिंकिंग, हमारी पर्सनालिटी और हमारे एक्शंस पर असरअंदाज होते हैं। हम जैसा सोचते हैं, जो हमारे वर्ड्स हमारे एक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और जो प्रोएक्टिव लैंग्वेज है वो किसकी लैंग्वेजेस है? वो लीडर्स की लैंग्वेजेस। जितने भी आप सब इस वक्त यहाँ पर प्रोएक्टिव थिंकर्स मौजूद हैं, आप सब लीडर्स हैं। चाहे आप हाउस होल्डिंग वाइफ हैं, चाहे आप अपने घर को मैनेज करने वाले मेल पर्सन हैं, चाहे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, आप जिंदगी के किसी भी हैसियत से काम कर रहे हो, अगर आप प्रोएक्टिव हैं तो आप अपने लीडर हैं। आप दूसरों के लिए लीडर्स हैं, आप उन्हें इंस्पायर कर रहे हैं। आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्सेज। जी, तो लीडर्स हमेशा क्या करते हैं? इंस्पायर करते हैं, सक्सेस को फैसिलिटेट करते हैं, ना सिर्फ अपनी बल्कि अपनी टीम की भी। तो एक एक्टिविटी करते हैं, एक छोटा सा सर्वे करते हैं। आपके ख्याल में क्या ये इसेंशियल है कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए प्रोएक्टिव होना जरूरी है? There will be a Mentimeter link share will be you can answer on it, otherwise you can share your responses on your chat box as well. जी, क्या ख्याल है आपका कि क्या कामयाबी हासिल करने के लिए एसेंशियल है कि हम प्रोएक्टिव हों? यस, okay, you can share your responses on chat box. Yes, yes, yes. So the survey is 100%. Everybody is saying yes. तो इस कंक्लूजन पर हम पहुंचे हैं कि हमें अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो हमें प्रोएक्टिव अप्रोच हासिल करनी है, हमें एक प्रोएक्टिव थिंकर बनना है। यस, स्टीफन आर कॉवे। Stephen R. Covey was an American educator, author, businessman, and a keynote speaker, and he is famous for his book, Seven Habits of Highly Effective People. So he introduced the seven habits, and the first one is be proactive. अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो अपनी 7 आदत पर आपने वर्किंग करनी है, और उनमें से सबसे पहली आदत, सबसे पहली हैबिट जो कि मोस्ट इसेंशियल है वो ये है कि आपको अपनी लाइफ में, चाहे वो आपकी पर्सनल हो या प्रोफेशनल, आपको प्रोएक्टिव होना है। Yes, exactly. Leader makes more leaders. Brilliant. और लीडर्स को सभी पसंद करते हैं। इंस्पायर करना किसको पसंद नहीं है? सबको पसंद है। ठीक है, अच्छा जी, वर्क प्लेस में कैसे हो? अब हम ये देखना है कि प्रोएक्टिव होना जरूरी है, इसेंशियल है। सर्वे, आप सबके सर्वे ने भी बताया कि हाँ भी रिएक्टिव होना जरूरी है। स्टीफन कवे ने भी अपनी बुक में लिखा कि प्रोएक्टिव होना जरूरी है। कैसे हो, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? सो प्रोएक्टिव प्रोफेशनल्स कैन लीड टू हाई प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। रिसर्च ने शो किया है कि जितने भी लोग जो प्रोएक्टिव अप्रोच रखते हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है वो रादर देन रिएक्टिव पीपल हमेशा हाई होती है। क्यों? प्रोएक्टिविटी ड्राइव परफॉर्मेंस एंड इनोवेशन ऑफ टीम्स।
एंड ऑर्गेनाइजेशन बूस्ट इंडिविजुअल फॉर वेल बीइंग एंड करियर। जब कभी जो भी इंडिविजुअल प्रोएक्टिव होता है वो हमेशा अपने बेटर फ्यूचर के बारे में सोचता है और इनिशिएटिव लेता है और स्ट्राइव करता है, रादर देन कि हम सूरत हाल के ऊपर अपने आप को छोड़ दें कि जब जो जैसी सूरत हाल होगी हम फिर वैसा करेंगे, हमारी तो किस्मत में ही ये लिखा हुआ है, हम क्या करें। एग्जैक्टली प्लानिंग करते हैं। तो जहां तक बात है लीडरशिप की, तो देखते हैं कि अपनी एंड पर जितने भी लीडर्स हैं वो चाहे किसी भी पोजीशन पर हो, सबसे पहली करेक्टरिस्टिक ये है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, दूसरों को अपनी एग्जाम्पल के थ्रू मोटिवेट करते हैं, ना सिर्फ खुद इम्प्रूव करते हैं, ग्रो करते हैं, अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनकी सराउंडिंग में, उनके टीम मेंबर्स हैं, उनकी फैमिली है, उनके स्टूडेंट्स हैं, अपने रोल से अपने एग्जाम्पल से उनको मोटिवेट करते हैं। और उनका ज्यादातर टाइम कहाँ स्पेंड होता है? परेशान होने में, स्ट्रेस आउट होने में? नो, प्लानिंग करने में, फ्यूचर की, अपने पास्ट को जहन में रखते हुए, पास्ट एक्सपीरियंस के रिफ्लेक्शन को लेकर वो आगे की प्लानिंग करते हैं कि इस सिनेरियो में लास्ट ईयर मेरे साथ ऐसा हो गया था, तो अब मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि वो प्रॉब्लम मुझे फेस ना करनी पड़े। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो हमेशा किसी भी सिचुएशन में काम होते हैं, कंपोज्ड होते हैं, एक स्माइल उनके फेस पर होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो बिलीव करते हैं वी कैन डू इट, एज अ इंडिविजुअल आई कैन डू इट, एज अ लीडर वी कैन डू इट। सिर्फ वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अपनी टीम को भी उन्होंने ये सिखाना है कि किस तरह से सिचुएशंस को हैंडल करना है। चलें जी, एक और एक्टिविटी करते हैं इंटरेस्टिंग सी। एक सिचुएशन है, ठीक है, इमेजिन करें कि आप एक स्कूल के लीडर हैं और आपके स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग ऑर्गेनाइज होने वाली है, ठीक है। आपके स्कूल के स्टूडेंट्स के कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत एग्रेसिव हैं और कभी भी वो अपने बच्चे की कंप्लेन को एक्सेप्ट नहीं करते, या टीचर उनसे जो पॉइंट शेयर कर रही होती है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि उल्टा आप पे ऊपर ब्लेम करने लगते हैं, शाउट करने लगते हैं, रूड हो जाते हैं डिस्कशन के दौरान। अब क्या होता है कि जो इर्द गिर्द जो दूसरे पेरेंट्स होते हैं उनके ऊपर भी बैड इम्पैक्ट कर रहा होता है। अब ये प्रीवियस ईयर में ये सिचुएशन आप फेस कर चुके हैं, अब नेक्स्ट पीटीएम आने वाली है, बीइंग अ लीडर क्या करेंगे आप? सोचें जी। बी प्रिपेयर बिफोर हैड, प्लानिंग करेंगे। कौन से स्टेप्स हो सकते हैं, कौन से सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो आप ओवरकम करें इस सिचुएशन को? पेरेंट्स को तो आप नहीं बदल सकते ना, दिस इज योर सर्कल ऑफ कंसर्न, आपके कंट्रोल में नहीं है उनका बिहेवियर, आपके कंट्रोल में क्या है? यस एग्जैक्टली, वी कांट चेंज दैम। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। चलिए रिस्पॉन्सेस देखते हैं, ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो हम कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि हमें पता है कि ये प्रॉब्लमेटिक पेरेंट हैं, तो हम उनका टाइम लास्ट में सेट करें ताकि वो बाकी के पेरेंट्स को डिस्टर्ब ना कर सकें, बाकी के पेरेंट्स इन्फ्लुएंस ना हो, या उनको गैदरिंग में बुलाने के बजाय, इनवाइट करने के बजाय उनकी इंडिविजुअल मीटिंग सेट करें। सबसे पहले उनकी बात को सुन लें, उनकी जितनी कंप्लेंट्स हैं, और फिर अपना पॉइंट शेयर करें ताकि जितना उनको गुस्सा करना है वो पहले कर चुके हों और वो आपकी बात को सुकून से सुन सकें, ठीक है। और किस तरह से उनके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सकती हैं पहले से उनके सोल्यूशन सोच लें, ठीक है। चलें टीचर की तरफ आते हैं। टीचर कैसी होती है प्रोएक्टिव टीचर? वो हमेशा अपने टास्क पहले से असाइन कर लेते हैं, उन्हें पता होता है कि अब नेक्स्ट वीक हमारी आपके पास टीचर्स के पास एक एकेडमिक कैलेंडर मौजूद होता है जिसमें पूरे साल के एकेडमिक प्लानिंग होती है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। कुछ टास्क ऐसे हैं जो पहले से कंप्लीट कर सकते हैं, जो कंप्लेंट्स और क्वेरीज हैं उनके अकॉर्डिंगली आप अपने सॉल्यूशंस पहले से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। यू हैव टू बी प्रॉब्लम सॉल्वर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली एंड have a can do attitude. Now we have another situation being a teacher, ये अमूमन सबके साथ होता है, ठीक है जनाब। वायरल है, सब बीमार पड़ रहे हैं, 2 से 3 टीचर्स एब्सेंट हो जाती हैं, अनसर्टन सिचुएशन है, बच्चे भी एब्सेंट हो रहे हैं, बट एग्जाम्स करीब हैं, एग्जाम्स के पेपर आपने तैयार करने हैं, नेक्स्ट टर्म की लेसन प्लानिंग करनी है, रिसोर्सेज तैयार करने हैं, क्या करें ऐसा? ये सारे काम कैसे मैनेज होंगे?
यस, एक्सेप्ट करेंगे चैलेंजेस को, टाइम मैनेज करेंगे। क्या क्या कर सकते हैं आप? सबसे पहले तो अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे कि 2-3 टीचर्स तो ऑलरेडी मेरी बीमार पड़ी हुई है, कहीं ऐसा ना हो इस सिचुएशन में मैं भी बीमार पड़ जाऊं, फिर मैं अपने ही टास्क कैसे कर सकूंगी। ठीक है, कुछ काम पेपर के हवाले से, लेसन प्लानिंग के हवाले से भी हम पहले से कर सकते हैं, राइट? ओके, स्टूडेंट्स कैसे होंगे प्रोएक्टिव स्टूडेंट्स? क्या हमेशा एग्जाम से 1 महीना पहले ही तैयारी करेंगे? नो, वो हमेशा अपना एक शेड्यूल रखेंगे जहां पर उन्हें प्रॉब्लम है जिस सब्जेक्ट में, पहले से उसके लिए हेल्प के लिए कहेंगे, ट्यूशंस लेंगे, किसी बड़े से हेल्प लेंगे, चंक्स में अपनी प्रिपरेशन करेंगे ताकि एट द टाइम ऑफ एग्जाम उन्हें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। जी, अपने असाइनमेंट्स, जो बिग असाइनमेंट्स हैं उनके लिए अपना टाइम शेड्यूल करेंगे और चंक्स में अपनी प्रिपरेशन करेंगे ताकि इन केस अगर एग्जाम के दिनों में कोई अनसर्टेन सिचुएशन हो जाती है तो मेरी तैयारी का टाइम पर पूरी होगी। जी, आपके घर में आपके बहन भाइयों में से किसी की शादी की सेरेमनी होने वाली है और उसी मंथ आपके एग्जाम है और किसी एक सब्जेक्ट में आपको मुश्किल भी होती है, क्या करेंगे इस सिचुएशन में? शादी भी अटेंड करनी है, एंजॉय भी करनी है, एग्जाम भी इम्पोर्टेंट है, ग्रुप स्टडी करेंगे, पहले से प्रिपरेशन करेंगे, बिल्कुल हेल्प लेंगे किसी से, जिस सब्जेक्ट में आपको मुश्किल है पहले से हेल्प लेंगे कि मुझे इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, काइंडली मुझे हेल्प प्रोवाइड करें ताकि मैं एग्जाम के लिए टाइम पर प्रिपेयर हो सकूं। शादी की तैयारियों के लिए शॉपिंग पहले से कर लेंगे, जो आपको घर वाले टास्क देंगे, इनविटेशंस रेडी करने हैं, वो सब पहले से तैयार कर लेंगे। पेरेंट्स को बोल देंगे कि मम्मा पापा जो मेरे हिस्से में आपने टास्क देने हैं वो मैं मुझे पहले से बता दें, शेयर कर दें, या ये काम है जो मैं पहले से कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। सो नाउ एट द एंड, do you agree that proactive professionals can be high achievers and achieve career success faster than reactive people? Yes, yes, 100%, exactly, that's great. So now अभी हमने कुछ सिचुएशंस को शेयर किया, ठीक है, कुछ और फर्दर प्रैक्टिस करेंगे। एक होम टास्क में आपसे आपके साथ शेयर कर दी जाएगी एक पीडीएफ फाइल जिसमें ये तमाम सिचुएशंस भी हैं जो अभी आपसे शेयर की, इनके अलावा कुछ और सिचुएशंस हैं। टाइम दें अपने आप को, सोचें कि मेरे पास इस सिचुएशंस के लिए कौन से ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस हैं जो मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, कौन से ऐसे टास्क हैं जो मुझे करने होंगे, तो अगर मुझे सडन ये चीज मेरे पास टास्क आ गया या सिचुएशन हो गई तो मैं इसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकता हूँ। सो द पीडीएफ फाइल विल बी शेयर टू यू, सोचिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और नेक्स्ट एट द एंड, yes, always remember that we are designed to be proactive. कोई भी जिंदगी में ऐसी चीज नहीं है जो हमारे सर्कल ऑफ कंट्रोल में है और हम उसे ना कर सकें। हमें इस रियलिटी को जहन में रखकर फोकस करना है अपनी चीजों को, अपने मामलात को, कि वो चीजें जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, जो हमारा सर्कल ऑफ कंसर्न है, बजाय इसके कि हम उस पर फोकस हो, उसको सोचकर स्ट्रेस्ड आउट हो, हम फोकस करें अपने सर्कल ऑफ कंट्रोल को और पहले से प्लानिंग करें। कुछ सिचुएशंस रहती हैं जिनके लिए अपना कुछ टाइम, अपना मी टाइम बचा के रखें। प्रोफेशनल है तो कुछ अपने टास्क पहले से करें कि अगर कोई सडन सिचुएशन आ जाए, कोई सडन टास्क आ जाए तो आप उसके लिए टाइम निकाल सकें, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने टीम मेंबर्स को फैसिलिटेट करने के लिए भी। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्रिलियंट रिस्पॉन्सेज, फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन, आई एंजॉयड अ लॉट। होप कि आप प्रैक्टिस करेंगे और जो आपकी लाइफ में बीइंग प्रोफेशनल या पर्सनल आपके घर में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं और आप पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और
नेगेटिव थॉट्स आपके जहन में आती हैं, अब आप प्रैक्टिस करेंगे कि आप किस तरह से खुद को डिफरेंट सिचुएशन में कूल रख सकते हैं, काम रख सकते हैं, कंपोज रख सकते हैं, और कौन कौन से ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस मेरे पास हैं, मेरे पास क्या स्ट्रेंथ है, जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं मैं उनसे कैसे हेल्प ले सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच। अपना फीडबैक प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा, पैटेट लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच for your responses, your prompt responses, and I'm very glad. I'm extremely glad that we have proactive audience. That's brilliant. That's brilliant. Thank you so much. I will be waiting for your valuable feedback. So this was the session of Fatma Muiz, and thank you so much, Fatma, to give such an informative, to share such an informative knowledge about proactiveness. And I'm very confident, and I'm very sure that it will be helpful for the all of our participants to proactive them and to raise their confidence as well. And I'm really very amazed with our all our participants. They are such a like really very proactive. So this session will be helpful for all of you. And now going towards our second training session. But before this, let me share you that we have EdPassion as cost partner. EdPassion is an educational consultancy organization which provides innovative, effective, and integrated training opportunities for those who need to polish their skills, with primary goal to bring improvement in quality of education and educational leadership in Pakistan under the directorship of Humaira Lakho. They have joined Edunext International Conference as course partner. We welcome Ed Person on this platform.
Huge round of applause for these children from the Effort Rehabilitation and Vocational Center for Special Children. So moving forward towards our second trainer, and she is Rashida Muslim, and her topic is Activate Schema. Activating student schema means putting things in context, and by doing so, you will encourage your students' exploration of the material. Activating schema can help your student better comprehend as they read. Student engagement requires intellectual involvement with the content or active construction of understanding. Let's welcome our second trainer of today, Rashida Muslim. Hi, Rashida. Assalamu alaikum, Shabina. It's Rashida Muslim. Assalamu alaikum, Rashida. everyone. I hope you all are doing well. I have some little problem with my camera, so I have to connect and reconnect every time. So how's everything and how's everything going? Seems like that these power-packed days which we are going along are giving a lot of information, a lot of engaging activities, and much more things to go. And the past days and the next few days, you all will going to witness what you will going to learn and what you will going to explore. So without wasting any time, Shahina, should I start my presentation? Okay, thank you. Assalamu alaikum, and here it goes. Okay, before that, I should turn on my chat, and then okay. Okay. Assalamu alaikum. Once again, let's start my today's presentation, Activate Schema, with the name of Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. I hope आप सब खैरियत से होंगे और अब मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगी और अपनी presentation begin करूँगी. So let's begin. Before that, who am I? I give you a brief intro of mine, that I'm a trainer, I'm a teacher, I'm a facilitator, I am an educationist. With that, I have completed my master's in teacher education. I'm director of Edificato, teaching in primary section more than 6 years. And with that, the above thing that I am a trained teacher from Teach and Seek. My motto, my aim is to change my students from students to learner, making them autonomous learners. As one of my trainers, one of our trainers, colleague trainer, has given the session on it, autonomy learning. Okay, moving on. The objectives of my today's training. By the end of the training, you will going to explore a lot of activities that will help you to make your lessons and engaging. With that, you will going to apply these activities to activate your students, your learners' schema. Moving on.
Okay, so we are going to start with a little activity. I want everyone to be ready with a piece of paper and a pencil. And once you are ready, please do let me know. I'm reading your answers in the chat box. Done, 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 done. Once you are done. Okay. Miss Fatima has already made they are actually, but after her session, the audience, the participants, they are all in the proactive mode. Thank you, Miss Fatima. Okay. Ready. That's great. That's great. So let's begin. What I want you to create 5 columns on that piece of sheet and name each column as with your 5 senses like smell, sight, touch, hearing, and taste. Hope you all done that. But right now, don't follow that third instruction. Just make a column of. That's great. Okay, now, before I will say anything, I'm going to turn off my camera. There is a reason behind. Okay. And I want you all to close your eyes and imagine that you yourself are standing at the seashore. Taste what you are tasting. Means when you are standing at the seashore, you have to write down what you will going to smell, what you will going to see, what you will going to touch, what you will going to hear, and what are you tasting. Pen down all these 5 senses on that sheet of paper. Aha, feel wind, cool breeze, smell popcorn, good. Good to hear this. What else? अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को महसूस करें कि आप अभी एक सी शोर पे खड़े हैं, बीच पे खड़े हैं और अपने 5 सेंसेस से उस सी शोर को एंजॉय करें. आपने जो 5 कॉलम्स बनाए थे जिसमें अपने 5 सेंसेस अपने मेंशन किए थे, आई वांट यू कि आप उस 5 सेंसेस कॉलम्स में जाके जो आप अभी फील कर रहे हैं उसको एक वर्ड में या सेंटेंस में जाके लिखें. Voice of birds, water flowing sound. Good. Sound of waves. Yes. Feeling cold water, waves, water, smell, healing, soothing feet on wet mud. Wow. Sandy, salty. Sight, people, love the air, sound of waves. Yes. This is what we will going to feel with all our 5 senses. Moving on. Now, what did you experience? I want to read your experiences while doing this activity. Will you please write it down in the chat box? क्या आप बताना चाहेंगे कि आपने कैसा महसूस किया जब आप वहां पे खड़े थे, जब आपने ये एक्टिविटी की? When I asked you to close your eyes, instead of मैंने आपको कोई पिक्चर दिखाई या मैंने आपको कोई सी शोर की आवाज सुनाई, मैंने आपको सिर्फ इमेजिन करवाया. It was soothing. It was internal relaxation. Yes, calms everything. Feeling relaxed. Yes. Yeah, you can, but you can imagine that. I told you that you have to imagine it, that you are standing on the seashore. फिर उसके बाद आप अपने आप के 5 सेंसेस को यूज करें. Mindfulness, imagination, refreshed, exploring ourselves. Yes, exploring yourself. That's good. Good. Okay, let's move on.
Describe the range of feelings you had during the activity. किस तरह happy? Okay. What else? Happy. Sorry once again. Okay, let's begin. So my question to you all, then how would you differently conduct the same activity? Agar aapko, thank you everyone for waiting. We are living in Pakistan. Yes, you all are right. और हमें ऐसी situation से अपने आप को cater करना आना चाहिए. Thank you very much. Okay, so मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर यही activity अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप करवाते हैं तो आपको किस तरह से इसको conduct करते हैं? I want to read your answers in the chat box, waiting for your answers.
How could you conduct the same activity in a different way? Okay, maybe I would play a sound of music because we feel fresh and forget. Okay, good. By showing them the pictures, right? Depend on the audience, that's good. Imagination with pictures. I will conduct the same activity by showing the images. Image as superhero, good. Showing videos, music, posters, imagination. I will display pictures, right? So there are multiple ways you can conduct the same activity by using different, I can say, modes and mediums. Right, we can display a lot of things. We can even show them the models rather than showing them the pictures. Am I right? Okay, let's move on. Now, what is schema? Does anyone know? Or should we move on? I want, yes, you will, yes, you can, visual demonstration. But my question is, what is schema? Schema is what we is already stored in our brain. Good. Okay, no idea. Okay, background knowledge, great. Motivation, okay. Memory in your brain, correct. Prior knowledge, yes, it's about our prior knowledge and how to activate that, how to bring into the mode of activation that helps the students to retain their prior knowledge. Okay. Now, a schema is a cognitive structure that serves as a framework for one's knowledge about people, places, objects and events. यानी कि आप अपनी पुरानी जो नॉलेज है, अपनी आपकी दिमाग में जो पहले की आपकी मेमोरीज हैं, उनको किस तरह से आप रिलेट करके अपनी नई लर्निंग को बिल्ड करते हैं. Without, see, whenever we are doing any kind of work, or for example किसी कैरेक्टर को हम कभी रिलेट कर रहे होते हैं, तो इन रिलेटिंग दैट कैरेक्टर्स हमारे दिमाग में सबसे पहले वही चीज आती है कि इस कैरेक्टर से मिलता जुलता पहले एक कैरेक्टर आपने देखा था, आपने पढ़ा था, आपने उसके बारे में कहीं सुना है, या आपने कभी उसके बारे में कोई वीडियो देखी है. दिस इज द वे हाउ यू कनेक्ट थिंग्स, एंड this is how you are connecting your prior knowledge and you are connecting yourself with the world and understand the new things. अपनी new learnings को, अपनी नई समझ, जो भी आप नया सीख रहे हो उसको कैसे build up करते हो अपनी prior knowledge से, वो होती है आपकी schema. Moving on, the theory of activity I just want to know, did I disconnect it from this slide? Shabina, I want to know, did I disconnect it from this slide? Okay, Jean Piaget's.
Thank you, audience. The theory. So we were talking about the theories. The theory he has given is based on 5 common schemas. Object schema, the schema which is actually talking about the objects and how we categorize them, like the car and the bus. Now, what is the difference and what is the similarity between them? कैसे car और bus same भी हैं और एक दूसरे से different भी हैं. Then comes the role schema. The role schema is basically the different occupations, the different in the roles, the genders, male, female, teacher, student, patient, doctors. This is where we are going to learn about their social roles, the occupations. Then comes the person schemas, where you learn about the person, the people around. आपके इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों के बारे में आप जानते हो, आप उनके बारे में, उनके लाइक डिसलाइक्स, क्या वो करते हैं, क्या चीजें आप उनसे अडॉप्ट करते हैं, क्या चीजें आप उनसे सीखते हैं, क्या अच्छी चीजें उनसे लेते हैं. ये चीजें हम अपने पर्सन स्कीमा से बिल्ड करते हैं. देन कम्स द सेल्फ स्कीमा. सेल्फ स्कीमा क्या है? सेल्फ स्कीमा इज बेसिकली वी लर्न about ourselves, हमारे likes dislikes, हमारी characteristics, हमारी personalities, जो हम जिससे हम अपने आप को portray कर सकते हैं, हम अपने आप को बता सकते हैं, that we all learn from this self schema. Then comes the event schema. Event schema, we learn about what happened and how to behave during various events. And these develops and get more complex as we are exposed to more events. Now, when we are talking about event schema, it is like, okay, 2 different scenarios हैं, उन 2 different scenarios को आप कैसे handle करोगे? At times, आपको जैसे proactive और reactive की हमारी बात हुई. At times, आपके reactions, at times आप स्कूल में आपका कैसा, आप किस तरह से आप react करते हो, और आपका same behavior, how you will going to react at your home. Yes, emotional balance, correct. Behavior in different events, correct. आपका अपना behavior, आपकी अपनी personality को आप कैसे depict करते हो in different, on different events. Moving on, the activity time, because I'm a person जो कि theoretic ज़्यादा नहीं है, activity ज़्यादा कराऊंगी मैं अपने session के अंदर. So I hope you all are ready. I'm sorry for disconnecting every time. I'm really apologize for that, but I don't know why this is happening. As far as my mobile phone is concerned, वो all time connected है. So okay, my audience and my participants, they all are connected. Yes. So let's start. Word verbs. What is word verb? And how we can going to use this in our class. If the audience, as I know कि यहाँ पे बहुत से लोग day 1 से, बल्कि keynote से हमारे साथ हैं इस सेशन में Edunext के प्लेटफॉर्म पे, तो day 1 में मिस सलीमा का अगर आपको सेशन याद हो, तो उन्होंने विजुअल थिंकिंग के हिसाब से एक स्टार्ट करने के लिए उन्होंने सबसे पहली जो बात की थी वो वोकैबुलरी की बात की थी. यस, वोकैबुलरी. आप कैसे वोकैबुलरी के थ्रू अपने कंटेंट को रिलेट कर सकते हो, आप जो कंटेक्स्ट पढ़ाना चाह रहे हो उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं. सो टू डू दैट वी विल गोइंग टू डू अ स्मॉल एक्टिविटी. मूविंग ऑन, Mentimeter. Here we am going to, as I'm a person जो अपनी ट्रेनिंग के अंदर टेक्नोलॉजी का डालना बहुत ज़रूरी समझती हैं, तो मैंने यहाँ पे Mentimeter की वेब लिंक को यूज़ किया है, और इस माइंड मैप के थ्रू हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे. एक्टिविटी क्या होगी कि I have already put a word in the center of the cloud. Regarding that, I have placed few questions around, और उन क्वेश्चन के थ्रू आप मुझे अपनी तरफ से वर्ड देंगे. So I hope you all are ready. Once the web page is visible, please do let me know. That's great that you have done this with your kids. Okay. So
Can't see. Okay. No, that will be appear on my screen. You have to stay here. I'm not going to share the link with you. I hope the Mentimeter is visible now. Yes. Okay. So as you can see कि मैंने center में एक word लिखा हुआ है happy. और अब हम मिलके इस happy को एक word web के अंदर create कर देंगे. That's good. Happy. सबसे पहले जो हम बात करेंगे उसकी मीनिंग की बात करेंगे कि क्या आपको इस वर्ड का मतलब पता है? If you know, I would like you to please write down in the chat box, so I will going to type it for you. Pleasure. Okay, that's great. Quick answer. That's great. Joy. Good. Joyful. That's great. A lot of words coming up. Bless. That's it. Yes. Family. Great. Great. Good word. Delightful. Excited. See, a lot of words are going to come up once you will going to put this question that what is the meaning of happy? Chocolates. Yes. For me, happiness, chocolates give me happiness. Cheerful. That's great. Flowers. Good. Feeling joy, satisfaction. That's great. Coming to the pronunciation of happy. So, see, when you, there are certain words, there are a lot of words in English, जो के spelling wise कुल अलग होते हैं, but उसकी pronunciation बहुत ही different होती है. So what I'm going to do, I will simply put the word in front of you, which you can easily read it. Happy. Happy. Yes. Collocation. Coming to the collocation. Come on. Yes, Asma, very good. Happy. Happiness, great. Then, any other word that comes into your mind? Happy, okay, okay. There are a lot of pronunciation. You can write it down for your student. Happily, right? Happiness. What else? Some other words that express the same thing. Happiest, yes, happening. We are moving to collocation. Okay, happily, that's good, that's good. Enjoy, yes, enjoy. What else? Happier, yes. Happier, let me write it down. Glad, good, glad, fun. See how many words are coming up? Now moving on to the translation of this word. Now, if being an English teacher, मैं अगर English में happy का word पढ़ाती हूँ, तो मैं obviously, as we are living in Pakistan, so हम उसको उर्दू translation देंगे खुश. But if you want to make it more vast, आप इसका फ्रेंच में भी वर्ड बता सकते, ट्रांसलेशन बता सकते हो, आप इसको चाइनीज ट्रांसलेशन में भी बता सकते हो, आप उसको जर्मन लैंग्वेज में भी बता सकते हो. सो देयर आर अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस विद व्हिच यू कैन ट्रांसलेट एंड increase the vocab of your students. Yes, hasi khushi. Good. Let's move on to the next synonym. So what do you think? Synonym की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या words आ रहे हैं? Pleasure, same, yes, pleasure. What else? Delightful. Good, delightful. Then glad, yes, glad. Bliss, yes, bliss, a new word. What else? Cheerful, great. Mindful, yes. A lot of word you can put up for your students in front of on the board, or if you want, you are using an online tool. इस तरीके से भी उनके सामने बहुत सारी चीजें ला सकते हैं. Opposites, antonym. Come on, teachers who are right now participating as a student. Sad, yes, sad. और कुछ जो jealous, okay, jealous, yes. Unhappy, yes, the most common word, unhappy.
crying, whining. Yes, cry. Aggressive, yes, aggressive. I agree with this. Weeping, yes, weeping, unhappy, gloomy. A lot of words, a lot of words. Unfortunate, sorrow, scared, yes, disappointment, yes. Let's stubbornness, yes. Let's move to the next word, that is sentence. How you will going to use the same word in your sentence? Aha. I'm very happy after taking this session. Love to hear this, and I'm very happy to conduct this session. I felt happy with my family. I'm happy to attend your class. Thank you very much. Today I'm happy because my birthday. Happy birthday, Asma. I'm very happy. I'm very happy with the team. I'm very happy with my life. Yes, you can use it in various way, in lots of sentences. Yes, I'm happy to see you. Thank you. I'm happy with the team. Edunext and the entire team is happy to see you as a participants. Thank you. Thank you very much. Okay, moving on. Let's go back. Okay. So we are back to our Mentimeter slide. I hope I'm back on my screen. Please do let me know. Happy to free workshop on Sunday. Yes. Yes, Nadia, I agree with you. Yes, ma'am. Thank you, Sanya. Okay, moving on. The next slide. The next slide will actually explains how to play the word verb. By creating the word verbs, we are going to put up the word in the center of the cloud, and then you can write a lot of questions around it, like part of speech, pronunciation, translation, sentence, synonym, antonym. You can even categorize it. So there are various ways you can ask your students. बहुत सारे तरीके हैं आप अपने बच्चों से पूछ सकते हैं इस word के बारे में. मैंने तो एक छोटा सा वर्ड लिया है, आप अपना टॉपिक भी डाल सकते हो और उस टॉपिक से रिलेटेड आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हो कि आप अपने बच्चों की प्रायर नॉलेज उससे एक्टिवेट कर सकते हैं, आप वो सारे क्वेश्चंस या सारे वर्ड्स आप पुट अप कर दें, एंड दैट विल बी अ ग्रेट ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी. ओके, एक्टिविटी 2. So hope you all like this activity. Yes. You can use the same activity, that word verb, even for the mathematics, by putting up the sign of addition plus in the middle. And then whatever you want to do, you know the 2 times, how to add 2 digits by 2 digit, because I'm a maths teacher. So मैं उसी तरीके से अपने सारी activities plan करती हूँ most of the time. Yes. साइंस के टॉपिक को आप डाल सकते हो. सोशल स्टडीज में आप रिवर पढ़ा रहे हो तो रिवर का कोई भी एक इमेज डाल दो. अगर ज्यादा आपको इंपैक्टफुल करना है तो आप वर्ड के साथ साथ आप इमेज भी डाल सकते हो. इंटरेस्टिंग. यस, ग्रेट. एक्टिविटी 2, लेट्स गो. एक्टिविटी 2 इज बेसिकली नेम्ड एज टेक अ पिक्चर वॉक. अब इस एक्टिविटी में वी आर नॉट एक्चुअली गोइंग टू टेक द स्टूडेंट्स फॉर अ पिक्चर वॉक. वी विल गोइंग टू शो देम some or one picture or multiple pictures before introducing the story or the topic, the lesson, the topic of the lesson. So to do that, we are doing an activity. Then at the end, मैं आपको बताऊंगी कि हम किस story के बारे में बात कर रहे थे. Okay, in front of you, you can see that there are 5 pictures. Taking the first picture, you can see I'm rotating on my screen. What do you think this picture is depicting? Can you please tell me? Soup. Yes, Asma, good. It's a bowl of soup. Yes. Right. Soup. Hot soup. Yes. Soup bowl. Great. Yes. Yummy soup. Corn soup. Yes, right now I am actually needed combo of winter and soup. Yes, very good. Hot and sour soup. Moving to the next picture. What do you think this picture is reflecting? Noodle with soup. Yes, you can say that, noodle with soup. What this second picture is depicting? Carrot. Yes. What else?
Carnival, great. Cartoon movie, okay. Grocery, we are talking about the second picture, this one. Going to a picnic, yes. Countryside, people in a cart, going shopping, yes. They are going somewhere, they are traveling somewhere, yes. They are going for a festival, yes. They are happy, yes. A family who is traveling somewhere, correct. They are traveling outside, yes. Transportation, village life, yes, village life. Great. Let's move on to this third picture. What this third picture is showing? What do you think is it? A rock, good. Quick answer, Batul. Yes, it's not a meat, it's a picture of a rock, yes. A big stone, a rock. Okay, sedimentary rock, stone with different layers. Oh, this shows that how my participants are observing the pictures. Yes, great. Let's move on to the fourth picture. The fourth picture where there is a mother and a daughter, or you might say that the instructor with the trainee, whatever. What do you think? They are cooking. The mother is okay, helping. The daughter is helping, baking. Mother cooking, helping mother. Relationship of mother and daughter, 2 generations chef. Yes, family gossip, breaking breakfast. Okay, mother and daughter is cooking to cook. Okay, helping hands. Great. Mother helping. Yes, mother is training to her daughter, or they are preparing something. They are cooking something. Moving on to my last picture. A fruit basket. Yes, a vegetable basket, correct, a vegetable basket. What else this picture is depicting? Grocery basket, great. Balanced diet, good enough. Yes. Now, when I'm asking you to just connect all these pictures, and if I ask you, can you create or can you think if it is a story, and I will give you a hint that it's an old folklore, which story comes to your mind? किस story के बारे में बात कर रही हूँ? You might read in your primary sections or in your play group, or might possible कि आपने कभी अपने bedtime stories में इसके बारे में पढ़ा हो. कौन सी story हो सकती है ये? Any guess? Former bring, okay. Any guess? Can you guess the name of the story? Hungry Caterpillar, okay, good. Anyone? Red Riding Hood? Think about it. You might come up with Cinderella, okay. Village and Healthy Life, special guest, okay. Happy Sunday. Anything? Any folklore, कोई ऐसी story जो आपको relate करे इन pictures के साथ? No idea, okay. Hansel and Gretel, yes, you can say that. Or kuch. Happy Sandy, yes. Hot Soup and Goldilocks, okay, good guess. हो सकता है कि ये भी हो शायद. So let me tell you, the story is basically hot soup. Stone, basically the story. Hot soup, stone, the farmers, the villagers, the cooking, the vegetables, all these relate to a famous story named as Stone Soup. The story Stone Soup is a European folk story in which hungry strangers convince the people of a town to each share a small amount of their food in order to make a meal that everyone enjoys and exits a moral regarding the value of sharing. Yes, very good. And this is the way you can create, you can take the pictures up to your choice and voice. आप कैसे relate करवा सकते हो अपने बच्चों को, आप कैसे उनको अपनी story की at least bring them to the title of the story. Yes, I conducted in my morning assembly. Yes, very good if you have conducted this. Wonderful. Yes, it's a very good story. It actually gives a moral. It has a lesson inside it.
You have it, okay, no problem. If you have written great story, yes. Now this is the way you can even, when you're teaching social science and you want to teach them some moral values. So this is a very good story if you will going to introduce to your students. Okay, moving on to the next activity, and that is activity 3. So are you ready? You definitely, please do read it. Do read it. Okay. Show and don't tell. Okay, what do you think? What I'm going to do in this activity? Any guesses? What we were going to do in this? No idea. Okay. Any guesses? Teaching. Okay, I'm going to teach something. I'm going to write a word. Show pictures. Okay. Object description. Riddle. Batana nahi hai. Dikhana hai, par batana nahi hai. Yes, you are right. It's like a riddle which the students will going to share or will going to solve with their prior knowledge. आप रिडल बना दो या आप अपने क्लास का एक, जैसे मैंने आपको बोला कि इंट्रोडक्शन दिखाना है या इंट्रोडक्शन देना है टॉपिक का, तो आप ऑब्जेक्ट दिखा सकते हो, आप रिलेट करवा सकते हो. बिकॉज कि एज वी आर ब्रिंगिंग टू माय टॉपिक, वी आर एक्टिवेटिंग देयर स्कीमा, तो आप क्या करोगे? आप कोई ऑब्जेक्ट दिखाओगे, लाइक ऑब्जेक्ट दिखाओ और उनकी कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट पे, उनकी प्रायर नॉलेज पे, उनके लर्निंग को अब हम ज्यादा we will going to go oops okay, and on the basis of their prior knowledge हम उनसे उनकी न्यू upcoming knowledge learning को develop करवाएंगे. Okay, so bringing, you can even show them the picture, you can even show them the model, you can even show them a video, but I have used a model while conducting this activity. So model will be, I think मेरे एक्टिविटी में उस मॉडल ने बहुत वर्क किया था जब मुझे उनको इंट्रोड्यूस करवाना था अर्थ एंड बियॉन्ड. लास्ट ईयर मैं अपनी एक्टिविटी की बात कर रही हूँ. अर्थ एंड बियॉन्ड मुझे इंट्रोड्यूस, मेरा टॉपिक था, एंड टू डू दैट मैंने उनको मॉडल दिखाया था एक स्पेसशिप का. हियर आई हैव बॉट not a bottle, but I'm going to show you the telescope. Up topic is in your mind. What student will going to do? They will going to just put up their knowledge in front of you. Everyone will get a chance to speak up about this object, about this model which you will going to share in front of them. अपनी जो भी क्या जानते हैं इस ऑब्जेक्ट के बारे में, किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, कब इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल होता है, what is the purpose behind. Maybe your smarter ones will going to tell or share their knowledge about who has invented this. क्यों इन्वेंट किया साइंटिस्ट ने इसको? Yes, it's a telescope. Yes. क्यों? क्या देखते हैं इससे? क्या हम दूर, does it look like glasses? क्या हम दूर की चीज नजदीक देख सकते हैं? There are a lot of things you can ask. Yes. तो इस तरीके से भी आप अपने बच्चों की प्रायर नॉलेज को एक्टिवेट कर सकते हैं. ब्रेनस्टॉर्म करवाने के बहुत डिफरेंट तरीके हैं. इट इज अप टू योर चॉइस एंड वॉइस. आप अपना कौन सा एक्टिविटी या कौन सी इंगेजिंग आप एक्टिविटी लेके आते हो अपनी क्लास को बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए. ओके, मूविंग ऑन टू द फोर्थ एक्टिविटी. Okay, but I didn't tell anything. As you are my trainers, you are the participants, that is why I'm telling you. आप अपने बच्चों को ये सारी चीजें नहीं बताएंगे. You will just going to put that model in front of them and then wait कि वो क्या बताना चाह रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं. That is up to your choice. That I am telling you because I want you to be prepared कि क्या चीजें वो बता सकते हैं. Exactly. Yes. Moving to our activity 4. Are you ready? Okay. Hot potato.
जिस हिसाब से अभी टाइम हो रहा है, मेरे ख्याल से सबको भूख भी बहुत लग रही होगी, तो हॉट पोटैटो will might help you out for this. This is yes fries, French fries याद आ गए सबको भाई यहाँ पे तो यहाँ पे हम हॉट पोटैटो सर्व नहीं करने वाले फ्राइज. वी आर गोइंग टू डू एन एक्टिविटी विद दिस नेम एंड इट इज अ वेरी एंगेजिंग एक्टिविटी. इस एक्टिविटी को आप बहुत से तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं. देर आर वेरियस वेज. प्राइमरी लेवल पे उसको एक डिफरेंट तरीके से कंडक्ट किया जाता है, सेकेंडरी लेवल पे एक डिफरेंट तरीके से कंडक्ट किया जाता है. बट बिफोर मैं आपको ये बताऊं कि हम इस एक्टिविटी को कैसे चलाएंगे, पहले आप मुझे ये बताएं कि बर्थडे पार्टीज तो सबने अपने टाइम पे एंजॉय किए हैं. आई विल डेफिनेटली मिस बर्थडे पार्टीज. तो आपने अपने अभी भी आप अटेंड करते होंगे या अपने चाइल्डहुड में आपने बहुत सारी बर्थडे पार्टीज अटेंड की. बर्थडे पार्टीज में एक बहुत ही फेमस गेम खेली जाती थी, पासिंग द पार्सल्स. रिमेंबर दैट? yes, passing the parcels. Hot potato is bit similar to that. अब यहाँ पे क्या होने वाला है, हम यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे कि we will going to take an object of a classroom और वो ऑब्जेक्ट बेसिकली हमारा हॉट पोटैटो होगा. हम उस हॉट पोटैटो को with a question we will going to pass it among our students. Now there are certain rules and regulation while playing this game. Rules and regulation क्या है? Passing the parcel में तो सिर्फ हमें पास करना था, म्यूजिक होता था, स्टॉप होता था, and then the one who is holding the parcel is out of the game. यहाँ पे कुछ डिफरेंट होने वाला है. यहाँ पे क्या डिफरेंट होने वाला है? डिफरेंट ये होने वाला है कि हम the teacher before going to pass the hot potato or that class object, आप एक क्वेश्चन पुट अप करोगे अपने स्टूडेंट्स पे, अपनी क्लास पे, and each member of the class will only get 5 to answer that question. 5 seconds में if the child or if the student is able to answer, so he will going to pass that potato. And if he is not or she is not, so or if he is taking time or giving an incorrect answer or might possible कि answer repeat कर दे, so that person is out of the game. So play this game like I will say कि मुझे ये गेम बेसिकली ब्रेकआउट रूम में करवाने का बहुत था, बट एज वी आर 100 in numbers तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता मेरे लिए, तो मैंने इस एक्टिविटी को बताना ज्यादा बेहतर समझा, ना कि ब्रेकआउट रूम में करवाना. ऑनलाइन एक्टिविटीज आप जैसे सेशन करवाते हैं, बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे ऑनलाइन सेशंस करवाते होंगे अपने ट्यूशंस प्लेटफॉर्म पे भी या स्कूल्स में भी, तो आप ये ब्रेकआउट सेशन करवा सकते हो. आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब मैं इसी हॉट पोटैटो को एक दूसरे तरीके से आपको बता रही हूँ कि आप यही एक्टिविटी कैसे क्लास में करवा सकते हो. फॉर द प्राइमरी सेक्शन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल गोइंग टू डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स. उन ग्रुप्स को, हर ग्रुप को एक एक क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा. उस क्वेश्चन पेपर पे आप एक क्वेश्चन लिखा होगा where each student in the group will going to write down the answer according to their prior knowledge. अब ये एक्टिविटी पे आप, जैसे कि मेरा क्वेश्चन है for one of the group is के what are adjectives. So the child will first write down the adjectives. The second person will then after 5 seconds or आप 1 minute का time दे सकते हो, within 1 minute that one person will going to pass that activity sheet to the second person or second member of the same group. इसी तरीके से आप वो third member पे आए, फिर fourth member पे, and once the person gets the same sheet back, the activity stops. Then you will going to ask for a volunteer to sum up with the answers, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी बेस्ट आंसर्स हैं वो हर ग्रुप अपना शेयर करेगा. सेकेंडरी लेवल पे आप क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट कर सकते हो, आप इसको रिव्यू में भी ले सकते हो, आप इसको रैपअप में भी ले सकते हो. सी देयर आर 2 ways टू यूज दिस, आइदर ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए और
when you have to wrap up your lesson. उनकी knowledge, उनकी understanding, उसको analyze करने के लिए, and to reflect your teaching. This is the best activity. You can work with it. Okay, so I hope you have all enjoyed this hot potato. My wish was to do this activity with you in this session, but मुझे लगा था कि ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है हॉट पोटैटो करवाना. आप इसके अंदर एक और चीज भी कर सकते हैं. अगर स्मॉल ग्रुप है तो आप वाकई फ्रेंच फ्राइज रख दें. जिस बच्चे ने सही जवाब दिया, द पर्सन इज अलाउड टू टेक 1 फ्राई. दिस इज योर वे. और हॉट पोटैटो नहीं है तो कुछ और, या कैंडीज या स्वीट्स, अ बोल ऑफ स्वीट्स रख सकते हो. इफ द चाइल्ड गिव्स द करेक्ट आंसर, दैट स्वीट बिलोंग्स टू दैट पर्सन. Yummy game. Yes, you can call this a yummy game. Exactly. Okay. So, as we all know, that all new learning is built on prior knowledge. I hope you all agree with this by the end of the session. अगर आपके पास अपनी पुरानी मेमोरीज नहीं है, या आपके पास अपनी प्रायर नॉलेज नहीं है जिसके बेस के ऊपर आप अपनी नई लर्निंग को डेवलप कर सकते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आप अपना लेसन इतना इम्पैक्टफुल बना सकते हैं. बुक क्लास में जाएं और डायरेक्ट यू आर आस्किंग योर स्टूडेंट्स टू ओपन अप अ बुक एंड वी आर गोइंग टू डू दिस टॉपिक टुडे, और आप टॉपिक का नाम बोर्ड पे लिख दें. रादर देन उस टॉपिक का नाम बोर्ड पे लिखने से आप उसी से रिलेटेड कोई ऐसी चीज या इनमें से कोई ऐसी एक्टिविटीज जो आपको लगता है आपके उस क्लास को, उस लेसन को बहुत ज्यादा फ्रूटफुल बना सकती हैं, डू दैट. इससे आपको मेरे ख्याल से ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उन बच्चों को उस टॉपिक पे लाने के लिए. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देयर आर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू एक्टिवेट स्कीमा. आप आपको स्टोरी मेकिंग पे या तो आप कॉम्प्रिहेंशन करवा रहे हो, उस वक्त देयर आर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज जो आप अपने बच्चों के साथ करवा सकते हैं. ऑनलाइन भी हैं, एंड एट द एंड मैं आपके साथ जरूर वो शेयर भी करूंगी जो आपके बच्चे आपके साथ, आप अपने बच्चों के साथ वो सारी एक्टिविटीज, अपने स्टूडेंट्स के साथ वो एक्टिविटीज कर सकते हैं. ओके, सो विद दिस आई एम एंडिंग अप माय session. I would like all to please share your valuable comments on the Padlet link, which I think my IT support has already done, has already shared in the chat box. Thank you very much. Yes, I hope, Saima, I hope the link has already been shared with the participants. Or would you like me to do that? Yes. Just wait. Let me take the honors for doing so. Yes, it's there. Ms. Farah has already shared it in the... Thank you very, very much for your valuable feedbacks. These means a lot to all of the trainers who are here in front of you, and thank you all for taking out time, especially on Sunday. And there is a shout out from my side and from the participants, from the trainers, especially today's trainers. I would like to say something. Let me stop sharing. यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी शबीना, कि आज के जो हमारे सारे ट्रेनर्स हैं वो बेसिकली एजुनेक्स्ट का जो बैच हुआ था, ट्रेन द ट्रेनर, उसके सारे मेंटोर्स. एंड आई एम very, very thankful to Miss Saima, to Miss Farah, to giving us such a great responsibility, for putting faith on us, for relying on us, कि हम उन trainees को as a mentor cater कर सके. Otherwise, मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे रह के ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये बात बहुत जगह कह चुकी हूँ कि जो कॉन्फिडेंस हमें यहाँ पे बिल्ड करवाया जाता है वो कहीं नहीं दिया जाता. Whether you are a new or whether we are already
known with this. यहाँ पे आपकी जो grooming होती है वो कहीं और जगह नहीं हुई है. Thank you very much. So true. Thank you very much, Ms. Farah, for giving us this opportunity, this responsibility. This is a shout out from all the mentors who are conducting today's session. Thank you very much. Thank you also. Thank you so much, Rashida. Thank you so much. Really appreciate the way you approach participants' imaginations and feelings by interactive and tempting activities. Of course, the hot potato part was so tempting, and you really activate everyone's schema. Also, thanks to all participants to participate actively. We have prizes for our participants. If you want to hear your name as the winner, stay tuned with us with the same energy. So this is the time to welcome our third trainer. But before this, I have something interesting for you. A small performance from Little Stars performance by Syed Muhammad Murtaza of KG Muhammad Sarib and Hadia Talpur of Nursery from Indus Levy League High School. My name is Mohammed Murtaza. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. If you want to take a crime about your ship, I am going to the moon. मेरी बोली वाली नीली नीली आंखों वाली गोश नो तो आंखें खोले मीठी मीठी बोले बोले गोश खोले. Oh, so cute performances. So now moving towards our third trainer, she is Shahina Hussain with us. Her topic is acquiring self-actualization. Every individual can be happy. Happiness is achieved when an individual takes full advantage of one's maximum potential. It needs identification and fulfillment of an individual's needs. Get ready to discuss the needs of students and teachers that can help them to utilize their maximum potential and acquire self-actualization. So, moving towards you, Shahina. Hi, Shahina. Thank you. Assalamu alaikum, everyone. Once again, I'm here at the platform of Edunext, and thankful to Ms. Saima and Ms. Farah for this opportunity. And today we are going to discuss something not very much different in the initial stage, but as the presentation proceeds, we are going to explore different things. Many of the things will be new for many of us. We have been hearing, and we have been knowing, or we usually believe in it. इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता. Sir Syed Ahmed Khan, oh yes, the human cannot be happy every time or at every moment. Whatever the person has, whether it is the matter of the wealth, respect, honor, or the fame in the world, or higher education, and many other things. So what we are going to discuss is how can we acquire self-actualization. Let me share the screen. Yes. Hopefully it is now visible on the screen. Or let me start the. So what we see here, that self-actualization. First, let's discuss it. What is self-actualization? Break the word self and actualization. Self means for every individual. It is different for every individual. When we say every individual, it is about the males and the females, children, adult, okay, and the age of every group
And actualization means something that actually the person has and person is reaching to the actual potential that he or she possesses. When we acquire the actual self-actualization, what happens? We utilize all the resources. We utilize all the abilities or the potential, and then we see that there is some new stage where we are happy. We do not curse, oh, I don't have the wealth, my leg is paining, I wish I could have done PhD or this or that. Whatever I am, whoever I am very much happy because I have utilized my potential. So moving ahead, Acha, let me kindly share if there is any query about the definition. Self-reaction, know yourself, self-awareness and satisfaction, knowing about yourself and utilizing the resources, the potential particularly. Okay? You can see my brief introduction over here. Director, Educationist said, diploma in 21st century skill from UK, teaching by types from Australia, authored the chapter, part of the curriculum development team, item reviewer and the editor. So moreover, as there was a long list, I tried to make it short. Then the next, let's proceed here. Let's have a short activity. We all are here because we want to learn and we wish to develop ourselves with the new learning. But there was a time when we all were the students. Recall your student life, whether it is school, college, or university. And what can you recall? If it had been over there at that time, my status would have been better now. हम अगर ये रिकॉल करें कि मेरी स्टूडेंट लाइफ में अब मुझे ये चीज मिल जाती तो आज मेरा स्टेटस बेहतर होता, मैं फला डेजिग्नेशन पे होती या मेरे पास ये कुछ होता. जी, नाउ इट्स योर टाइम. Guidance, best teachers, guide to achieve the goal, confidence. I'm satisfied with my current status. Good. I'm really happy that in this age, in this era, few people are satisfied with their status. But ask yourself, are you utilizing your all the potential? What if you utilize your all potential? What can be the feedback outcome? Confidence. So what we see, majority says that there was something that was not provided to us, that was the right of the student, like motivation, confidence, guidance. So it means that there is some need of the student and we are supposed to fulfill that needs. Let's move. The second part of the activity is, now majority of us is teacher. Okay? Are you satisfied at your workplace? Are you satisfied as a teacher? At your workplace, again, the same thing, whether you are teaching at a school, at a college, or even at a university. What you feel that if this thing is provided, if this is the thing, if this is the facility I acquire, I get at my workplace, I can be a better teacher. I am satisfied as a teacher, but not to the workplace. Yes. Story of many of us. Guidance. We are teachers and we need the guidance. We expect the guidance and it is our right to get the guidance.
how to teach, how to treat the students. But in workplace, dream to be more better. How can it be better? Many of the participants are happy. Resources, we need to learn more things. Satisfied and still learning. The question ये है कि आपकी वर्क प्लेस पर कौन सी ऐसी चीज है जो आप समझते हैं कि अगर ये चीज मुझे मिल जाए, ये बिहेवियर मुझे मिल जाए, तो मेरा स्टेटस एज अ टीचर बहुत बेहतर होगा और मेरे आउटपुट भी बहुत बेहतर होगा. कॉन्फिडेंस. यस. ट्रेनिंग. सो हमने क्या देखा कि वी ऑल नीड समथिंग, वेदर वी आर स्टूडेंट्स और द टीचर, वी नीड डिफरेंट, we have different needs, different requirements, and so usually most of the time we think that if this thing is provided, we can perform better and the education sector can be developed further. I don't know I should use the word further over here or not, क्योंकि education sector in Pakistan, I don't want to use any word. खैर, country तो हमारा ही है. अच्छा, again the same thing, not the repetition, but brief introduction. Self-actualization was introduced. It was a theory of Abraham H. Maslow. What he did, rather than thinking that it is the negative point, this is the disability, this is the problem, focusing on the negative things or the lack of the resources or unprivileged people, what he did, he focused on the things that if they are provided, how the performance, how the happiness of the people can be improved, how a person, again I repeat, it is for both student and the teacher, how they can perform better. So he worked, he researched on the behavior, and particularly he researched on Einstein and Abraham Lincoln. Einstein, it is till today, it is said that he had the highest IQ level. IQ, intelligence quotient. And Abraham Lincoln, very famous in America, the president of America, who thought for the welfare of the people and stopped the slavery. Slavery was continued for centuries. What they used to do, purchasing the Negroes from Africa, taking to America, and then asking them, just like a londi or gulam hote hain, unse apni marzi ka kaam karwate the. Saima Qadir, you have raised a hand. Is there any thing to share, or it is by mistake? Okay, let's proceed. Now, when we have the example of Einstein or Abraham Lincoln over here, what we see that according to a few news, I am not sure that it is good, it is confirmed or not, the girl at Balochistan has the higher IQ than Einstein. If it is so, we need to see in future that she performs better than Einstein. She introduces some theories, new theories. She does the research work and say it is, and it is on the news and on the record that yes, she is better or she is almost equal to Einstein. It depends on different things. First of all, it is a news or a rumor about the girl in Balochistan. Second point, if it is confirmed, it is a confirmed news, then in future we need to see that how she will be performing. Okay? And Abraham Lincoln, we see that Abdul Sattar Edi, fine, he didn't work out with the slavery, lekin the personality had the courage. He had the vision that he is going to help the people, and he did it. Air ambulance is not an easy task.
So what we need to reach these levels, we are going to discuss this thing. Okay. I am closing it. First of all, there is a physiological need. We all have physiological need. Breathing. Just 1-2 सेकंड के लिए भी हमारा सांस अगर उखड़ने लगता है तो एक अजीब कंडीशन हो जाती है. ठीक है. Clothing. Right now, whatever the temperature is in your area, wherever you are sitting, if you do not have the warm clothes, what will be the situation? Water, life. Without water, life is impossible. Food, these all are the things that we need to survive, to live. And what is it? Homeostasis. It is the status, it is something related to sugar, diabetic people, and the blood pressure. What happens? We all are aware these are the two common health challenges in Pakistan, in the entire world. Okay, whenever the blood pressure is very high or very low, what is the situation? When the sugar level shoots up or sugar level is very low, glucose level, what is the situation? In this situation, if in the absence of these things, can we think that मुझे बहुत अच्छा पढ़ाना है, I have to work very hard, I have to plan well and give a productive class to the students? Or as a teacher, as a student, can the students think in the absence of these things that fine, I have been suffering from these problems, but now I have to focus on my studies. I'm feeling hungry to some extent for a few minutes or the hours the child can tolerate it, but for how long? So do you think that physiological needs are important? Now tell me in the chat box first about the students. What are the physiological needs for the students? Yes, it is important. What do you think in the classroom? What are the physiological needs of the students? Good environment. Motivation. Motivation is something else. We are talking about something about water, food, breathing, clothing, behavior. Actually, the answers are coming from, I'm getting the answers that are related to other levels. So I'm stopping looking at the chat for a while. Very simple example. There are the teachers. You cannot go to you cannot go outside, or even there are teachers who say, drink water afterward. First, listen to me. Okay? And in this situation, continuously there is something in the mind of the student that I'm thirsty, teacher is not letting me drink water. The student cannot focus. For clothing, it's a good opportunity that I'm discussing this topic. It is winter and expected temperature will be further low. And if we belong to the group of the school, college, and the university, where we have some authority, and if students are not wearing the uniform sweater, and we are compelling them purchase it, either student will get absent or continuously feeling something, and or the student is not wearing the sweater. We all are wise enough, we can think it over. Now the teachers, what are the physiological needs of the teacher? Obviously, it cannot be that the food is provided from the school.
Yes. What can it be? Clothing cannot be provided from the school. Helping, tea. There is a large number of the schools where drinking water is not available. So if the water quality is improved, one tension will be released. Okay, this requirement is available, is fulfilled at school, and I'm not supposed to carry the bottle, filling the bottle, washing the bottle, and many other things. In the education sector, the age bracket is different. The teachers are from all the age brackets. In Pakistan, even the teaching starts from around 15 or 16 years old. So if the and it continues till 60 and 60 plus. So if there is the facility to check the blood pressure, to check the glucose level, and what is required in this situation, how can the teacher be treated if such facilities are available? What do you think? What will be the situation? Is this facility available at your school? Okay, Miss Shaina is not feeling well. Glucose check करें. Miss Shaina is not feeling well. Blood pressure check करें. Oh my God, ये medicine फौरन से दीजिए और Miss Shaina फौरन खड़ी हो गई. In most of the cases, no, it is not so. Moving ahead. Okay. Next one is security and safety. Financial security, safety against injury and accident, job hunting, a crisis nowadays, health and wellness. So safety from health issues and safety from financial issues. In the case of the students, what are the financial security? If my parents cannot pay the fee on time, I might be kicked out from the school. We see number of the videos on social media. Student के perspective से देखते हैं job hunting. My father is not earning well, or my father is jobless. How can I continue? How can the studies? Because a number of the things are required. Fine, books are purchased once a year. Continuous shopping of the notebooks, maps, drawing books, colors, and water bottle. We all know okay, what are the requirements in this situation. Can the student focus on studies? I wish to go to school, but my health is not fine, and I cannot afford the doctor. Okay. Now come to the point of teachers. What do you think? What can be the security and safety needs of the teachers? Helping what? Mental peace is required. Salary on time. It is not only about the salary on time. Since COVID, we have seen the number of the teachers are terminated because there is a downsizing. Is health insurance provided to every employee, every teacher? Is loan provided to the teachers? No. Most of the answers, no. If such facilities are not provided, it means Shaina Hussain does not have these facilities at the workplace. So what Shaina needs? Shaina will be thinking on other resources where I can manage these things. Now my attention is diverted. I am going to the job, I am going to the workplace, but what happened? Continuously in some part of my brain, I
I have been thinking like the same things. I cannot focus on my planning again. I cannot focus on the things that are required by my students. Yes, any query till here? Same circumstances. Unfortunately, late payment, late pay. This is actually the matter with all the happenings around us. Yes. When I was working on this presentation, मुझे ऐसा लगा मेरी दुखती रग पे किसी ने हाथ रख दिया है. और मेरी का मतलब है कि हमारी सोसाइटी की दुखती रग पर किसी ने हाथ रख दिया है. एवरीवन, मेजॉरिटी फेसेस. ठीक है, मूविंग अहेड. नो क्वेश्चन अप टिल नाउ. Please don't get emotional, otherwise I will also start crying and my emotional intelligence will go away somewhere. ठीक है, moving ahead. It is a basic thing. ठीक है, physiological, and now the security. The next one is what happened. My physiological needs are provided, and my safety, I am getting the safety measures as well. These are the basic needs. Now my performance is as a teacher. Rabia says you are accessing the screen. Is there anything to share? Acha, now what happened? Okay, now my level, my performance is increasing, getting higher, whether I am here as a teacher or as a student. Don't you think? I'm focusing more on studies. I'm not, okay? Physiological needs, you might have come late, means physical things like water. Team, please check that who is accessing the screen. Please monitor it. Physiological means physical things, water, food, and we talk about a bit higher thing, blood pressure, glucose level. Okay? Now the pyramid is getting higher. Air as well, because if there is no oxygen or shortage of oxygen, I cannot breathe. Not a single living thing can breathe. Now moving ahead, now we are getting higher. Next one is social needs. Man is a social animal. जी, इंसान एक समाजी जानवर है. Whatever the personality is, the person is introvert or extrovert. We all need the relationship. We need the friends. We need the family terms. Okay? Emotional relationship, family relationship, community. As a teacher, I need to communicate with other teachers. Why are you people here? Why I am sharing the points, this presentation? Because it is the need of every community to interact with others belonging to the same community. If I had been a woman, businesswoman, obviously my circle would have been different, but I would have been interacting with my community. Social groups, it might be ethnic groups on the basis of the language, can be on the basis of the religion. And another thing is romantic attachment. We need to understand that it is social needs. But how to control it, how to address it positively, we need to learn it. Because we come across number of the participants and number of the students who are involved, who have the romantic attachment, and we either scolding, criticizing, rather than understanding and then guiding them.
Yes, any query till here? Now my level is higher, 1 grade higher. Thank you, Nadia, very active, mashallah, and more other participants are also active. Now, next thing is, I have the social circle. Fine. I am interacting with the people in the family, in the circle of the friends, my community, teachers community, and the trainers community. I'm sorry, I skipped over here the need of teachers. What about the teachers? Yes, indirectly we have discussed that we need to communicate, we need to interact with the other teachers and the students. And the students need that at home there is the peaceful environment. At school, the other participants and the teachers are interacting with them. Then the next one is esteem. I am interacting with the teachers. I am interacting with the trainers. But how I have been humiliated, how I have been pressurized. Do you think we as the teachers or the trainers work in this situation? Rather than understanding each other, start blaming the game. If there is no respect, if there is no appreciation, no personal growth, so what happened? Obviously, we will start staying back. Okay? Same happens with the students. Students need encouragement. What we usually do? Wrong answer? Cross. Easy to check how the child is feeling. Coincidence, just a point came in my mind. Most of the time we are using the red pen for the checking. Try to replace it with the black pen and find the difference how we are feeling about the checking material. Colors have the psychology, the colors have the psyche. In Spain and other countries, bullfighting, what happens in the bullfighting? Red cloth is shown to the bull and it gets aggressive. Same is the situation here. When we are marking with the red color, the student who is getting excellent, keep it up, it can be fine to them. But the students who are getting the comments, try again, check the spelling. I have explained many times, still you are doing the same thing. What would be the level of the self-esteem? Rather than rising up, rather than raising up, it is going down, lowering, and it affects the personal growth. So what can be the situation for a better situation for the teachers? How can teachers' self-esteem be provided? Positive words for the teachers. How can we facilitate? How can we maintain the self-esteem of the teachers? Appreciation letter can be by words, even the body language, facial expression, acknowledging in the meeting, positive remarks, attention. Fine. Do the teachers have the voice in the school matters? Now, the same point, esteem needs for the students. How students' self-esteem be maintained? Again, the same appreciation. Okay? Certificates. If I cannot do anything for the student, what I should do? At least my facial expression, my behavior, my body language should depict it, should show it. Badges, small certificates, name,
name is announced in the assembly. Do we practice it? Moving ahead, then what is the next one? All these are provided: physiological, okay, social, as physiological, social, safety, and esteem. Then the fifth is the self-actualization. The stage comes where the potential is fully utilized. Now, did you notice that in the presentation, the series, the continuation is different, okay? And I shared different one. So it does not matter that after physiological needs, there is the safety need. No, the researchers say that it is not hard and there is no hard and fast rule that which level, which need should be provided first, whatever can come first, whatever is possibility. So what now, all the four things of Shaina Hussain is complete. All the four status or the needs of yours are fulfilled. Now we are starting using the potential 100%. So we are reaching the self-actualization. Now the working is according to potential. Now we are feeling satisfied and happy. Now we are not worrying about what happens if there is no money. I am feeling hungry. What if my teacher scolds me? What if I, as a teacher, is scolded by the management? Fine, we all make mistakes. Mistake is the part of the learning. So it is the self-actualization that is the fifth level of self-actualization. Till here, many of you already knew it. We are going to proceed something new relevant to the same topic. Up till now, if there is any query, please type in the chat box and let me switch on the light. I'm waiting for your questions at this stage. Clear all four. So do you think that we know four things? We as a teacher can facilitate other teachers, the colleagues, and the students to reach self-actualization? What I believe is that every individual can facilitate others to come closer to the self-actualization. Obviously, Shaina Hussain or you or any one of us cannot provide the jobs to jobless people. We cannot teach the whole nation, even the children who are out of school. But we can provide sympathy. We can respect them. The extra things that we have, we can provide them, we can give them. Yesterday, I was setting up my cabinet, my cupboard, and I was embarrassed with myself. I'm not going to share the number of the dresses. I was feeling so ashamed that I have so many dresses, and there is a number of the people who need the dresses. It's my own feeling. Simple thing, अगर हम self actualization की बात करते हैं, very common blunder I would say that कचरे वाला आया है, sweeper. I give the people कचरा, so मैं हुई ना कचरे वाली तो, rather than saying कि कचरे वाला है, सफाई वाला आया है, there can be a positive thing. ठीक है? Time, we can complete it. So I'm sharing one more example. Before a few years, I was going
and I by auto, and it stopped at the signal. There were the two people who collect the garbage. There were three people from the garbage. Again, I repeat, from the garbage, there was one roll. I don't know who threw it away, how old it was, whether it was in the condition to eat or not. The child took it out. There were three children. Made it half, it's half, two halves. One was given to one child, younger one, and the half one was further divided and given to other one. And I wished I could help them. Anyhow, I'm getting emotional. Okay? Asha, self-actualization, majority of us knows. What if this self-actualization, that is the highest point, becomes the base for the next level? Think it over. Now we are reaching here. We have reached it. We have acquired self-actualization where there is no worry. I am passionate of painting. I am busy in it, whether I'm earning or not. I wish to be an astronaut. I can be working on it because I do not have the worries about home chores and other things. Just for a few seconds, the topmost level, self-actualization, becomes the base for further learning. Yes, now I wish to hear your voice, your comments. अगर मैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर पहुंच गई हूं, if I have acquired self actualization and then I am reaching a higher level, our next level of learning, what will be that? In the chat box, the topic has been diverted, I guess. Please listen to the query, listen to the question. Let's suppose for a minute we have acquired the self-actualization. We all are happy, satisfied, no worries. We are doing according to our potential. Now, this self-actualization, that is the highest level. Okay? Now it becomes the base. It becomes the base of further development. How would you feel now? What will be the result? My dear participants, we are not discussing the reasons anymore. The slide has gone, that we have discussed it, and we are going to discuss something different. Please focus on it. After reaching the self-actualization, there is the cognitive needs. Cognitive needs means I have learned whatever potential I had, but I am enjoying the self-actualization so much that now I am ready to learn, to get the knowledge beyond my limitations, beyond my potential. I can use, let's suppose I'm giving you a very simple example. I have the potential to learn only A till Z. Fine, A to Z. I have learned. I don't have potential to learn more. But if I have reached the actual self-actualization and I have learned it, and I further continue learning, my knowledge will be beyond my potential. I would try to explore more and more fields, the domains of knowledge. I would try to learn the subject in depth, and I would be interested in research. Do you think we in Pakistan have a large number of the researchers?
Is there any theory? Is there any theory or a few theories in education sector that have been introduced by Pakistani? I don't find many. It means Pakistanis are not reaching to cognitive level, or the cognitive needs are not fulfilled appropriately. Though, according to the research, the IQ level of Pakistan is IQ of Pakistan is 82, and in the world it ranks 79. In the world, it ranks 79. IQ is 82, and other countries, India has the lower IQ than Pakistan. Bangladesh, lower than Pakistan. Nepal, no, lower than Pakistan. But where they stand, it means something is available over there that is helping them to reach, to acquire the self-actualization. Yes, cognitive need is a broader level, vast topic, and I'm just going to introduce it. If the needs, all four needs are provided to that person, that child, female, girl in Balochistan, don't you think that she can, her cognitive needs will be the next thing? And if she gets the needs fulfilled, she will be equivalent, almost equal to Einstein. And I pray that this is the news, not a rumor. Moving ahead. Now, another level. Aesthetic needs. Desire for pleasing surroundings and beauty in life. Now, I have observed, the color also shows there are worries around me. There are problems around me. I should try to beautify the life. Not only the life of myself, the lives of others. I can help. Yes, Abdul Sattar Idi can do it. Someone else can also try to reach that level. Okay? Working for others, improving the environment collectively for others. Leave the personal benefit after reaching this level. Or I would say ignore the personal interest, and then you can reach aesthetic needs and it can be fulfilled. So to develop further, to reach the highest point, we can ignore our few needs. Okay? If we are required to grow further, we are interested in the growth of personal growth and the growth of others. Helping others, love others. Now, we didn't connect. I'm sorry, I didn't connect it with the teachers and the students. Previous slide. Cognitive needs. How can cognitive needs of the teachers be fulfilled? First of all, and the students as well. First of all, the environment, the resources should be available where they can become, they acquire self-actualization. Cognitive needs, then the research work and the other things, it is the next thing. And at the moment, it cannot be very much important in Pakistan, because first of all, we need to focus on self-actualization. Similarly, over here, aesthetic sense, aesthetic needs, not the aesthetic sense. And then the last is the 8th level, transcendence needs. What happens over here? Here, people do not behave like the normals or the physical human, like me, okay? But they start thinking of others, that we have discussed in the previous one. They try to help others.
and they try to improve the society. And they try to help others without carrying the needs of oneself or the family only. Then moving ahead, when we see all these things are available, needs are fulfilled, then this is another pyramid. This pyramid is another pyramid that is built after acquiring self-actualization. Now, what I told you in the beginning, just before a few minutes, that this pyramid is built on the pyramid of self-actualization. See here. The base, the 5 steps, 5 levels, it becomes the base, then these 3 are over here. As a teacher, if we try to facilitate others to be closer to the self-actualization, okay, then what happens? Everyone would be working beyond the potential. And what can be the target achieved? What target can be achieved? Sky is the limit. Okay? Sky is the limit. Recently, there was a research on a black hole. How dangerous voices were coming. Rather, I would say that noise was coming. The telescope has observed many things very minutely because the telescope is stronger than the previous ones. So here, after reaching these levels, we will not be only the professors. We will not be simple scientists. If we work on these lines, if we plan to work on these lines, after a few years, we can see that there are the students who will be the astronauts from Pakistan, world famous economists, world famous researchers, new theories introduced by the Pakistanis in every field of life. And Pakistan will be shining among the different stars. Yes, any question till here? Yes, there are many researchers in Pakistan, I agree. And good to see that you must be knowing that the different research programs have been started. I have seen recently, and I also did the research, very brief research, and it is not the appropriate time to share the research result. Lekin, still, it is 15th January 2023. How many educationists you see in Pakistan who have introduced new theory? No. We are not going to use this Piaget or this one or that one. We have to work. We have to try this new thing. I didn't negate that there is no research in Pakistan. My point is that how many researchers are there in terms of the percentage? And researches can be done in the fields of? Now you tell me that researches can be done in which fields? Percentage is low. Why is it so? Medicine, education. Yes. Only medicine and education?
Pakistan is the country where there is much scope to work on agriculture. What is the price of flour? What is the price of different vegetables, fruits, grains? How many companies that deal with the technology have been introduced from Pakistan? What is the gadget you are using? Is it made in Pakistan? Or have you heard, oh, this was the best one in the world. Now Pakistan has developed this better than this one. This new business idea has been introduced by Pakistan. Related to business, we know that most of the largest world businesses owned by the Jews, and many of them are from Israel. Their IQ level is much lower than Pakistan, much lower than Pakistan. But as the needs are fulfilled, they are successful. Yes, any comment? Then the next one is, why self-actualization in education? I explained it, but I wish to see your answers. If I'm scolding the students, affecting their self-esteem, fine, I'm getting my salary. How can we help students to get self-actualization? Are appropriate equipments available in the educational institutes, in the laboratories? One computer, 5 students. The student of my type. Okay, you people do, I will look at it. Obviously, I would not learn technology in this way. What is that? Please try to change the color. Rather than checking with red color, use black color. I would not ask you people to use blue because majority of the students use it. Okay, and then feel, while checking, you will feel there is some psychological effect. Continuously looking at red color and checking, it upsets me. It upsets you, but we are habitual, so we ignore it. We do not notice it. Similarly, it affects students. They are habitual. Okay, but when they see that some other color is used, black is used, black is not the hard and fast rule. Then the feeling would be a bit better. Motivating the students. Now the next is, how can you facilitate students to acquire? How come that it is a similar? Education sector, self-actualization. Education sector, a vast sector, and over here the self-actualization can be provided, facilitated by different stakeholders of education, community, parents, school, student. Okay. So what we see here, that it is the responsibility of all that the required updated syllabus should be provided. I'm using the advanced technology at home. You all are using, but at the school, I'm still learning. There was a DOS system, floppy disk was inserted. I dream to be software engineer or something else. And what you are teaching me? Same is the situation with our students.
Do you agree? Then the next one we have discussed, the educational institutes. Now the teachers, poor teachers. How can we facilitate teachers to acquire self-actualization? Now I expect your answers. Training should be provided, yes. Conduction of the courses. Is the training only thing? Only learning is required? The attitude, I am sending my teachers for some training. She might be having some personal problem. And let me share my own experience. Somewhere I was conducting the session, and as soon as the session started, the participant came to me. Please listen to me carefully. I don't have the courage, but I will definitely share. The participant came to me crying, and she said that perhaps father or brother got injured or accident happened, something, and he is hospitalized, and she has to run away from this workshop, and literally she was crying, and I was feeling embarrassed because she was thinking that I am the authority, and she, to fulfill her emotional requirement, she needed my permission. She asked me, and I allowed her. Okay, fine, you can go, but write down the name in the attendance list. What was the next sentence? Miss, please, मेरे स्कूल को पता नहीं चले. क्या मतलब है? क्या इस कंडीशन में मैं अगर बिठा लेती, could they learn? Could she learn? This was the experience that can be shared, that can be seen. Okay, there is a number of the teachers going to training because of the pressure. One pressure from the school. Now, because of this pressure, the trainee, the participant thinks that there is the pressure of the trainer as well, because of the perspective. Please think it over. Yes, time to feedback. If you have any query, I'm here. Under pressure, no one can learn. Should be friendly and firm environment, respectful environment for students and the teachers. Yes, team, support team, would you share the link? Or they have to participate, comment here. Okay, I'm enjoying your answers over here. So thank you so Okay, much there's to no make link for all the of us. feedback, like your feedback is important, and you are providing the feedback over here. Okay, so thank you very much. If still you have the queries, I'm here. One thing more. Rather than saying that it was a good, it was informative, informative is somehow fine, balki good, it was good, excellent. Try to specify the thing. Do you like the information new? It was new to you? Or the way of conduct, the way how it was conducted? Was it interactive? New topic for you, particularly the next, the last 3 levels.
was also new to me. No, dear, there is no link over here for this feedback. Yes, many of you knew the first 5 levels of Maslow's hierarchy need hierarchy, and now the next 3 were introduced. Dear participants, there is no link over here, and thank you very much for active participation and the feedback. Thank you from my side, and Allah Hafiz from my side. Yes, Shabina. Thank you so much, Shaina. Thank you. Thank you so much to make all of us utilize potential, to acquire self-actualization, to boost our confidence, and to teach us the different ways to implement self-actualization in education. It was such a fruitful session. Hope this will help everyone to achieve their self-actualization. I would request participants to keep submitting your feedbacks after every session. Stay tuned with us for your rewards. So now, welcoming Shaheen as a course partner on the platform for Edunext. Shaheen Digikids is a free educational YouTube channel for elementary students to learn from animated videos. Each video is designed keeping Pakistan's culture, language, and context in view. These videos provide specific content lessons by providing several real-life situations followed by worksheet for practice and repetition. These are accessible for teachers to include in their lessons and for parents to help their children with homework or extra practice. Welcome on board. So now this is time for our last but not least trainer for today. So I am very excited to announce our fourth trainer, Ms. Farah Musharraf. One thing that is certain is that adversity is inevitable, but how one cope up with this adversity without bouncing back from setbacks is about resilience. So with the interesting topic of resilience in 27th century, let's welcome my lovely ma'am Farah Musharraf. Ma'am, over to you now. Thank you so much, Shabina. And that was a lovely session from all our trainers जो मुझसे पहले आके गए हैं. And assalamu alaikum to everyone over here and on YouTube, those who are watching over there. कैसे हैं आप सब लोग? I hope you are enjoying these sessions. And yes. So this is Farah Musharraf, Director Seek, Aspire to Learn. पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर देती हूँ मैं आप सबके सामने. आपके साथ पैडलेट लिंक शेयर हो रहे हैं. अब तक उनको आप प्लीज अपने नाम के साथ शेयर कीजिएगा. एंड अब तक आपकी सबकी रजिस्ट्रेशन, सबकी अटेंडेंस जो है वो हमारे पास है. एंड अब तक जिस तरह से आप लोगों ने इतनी एंथुजियास्टिकली, इतनी एनर्जेटिकली हमारे साथ कनेक्ट रहे हैं और इतने लर्निंग के सफर में बहुत सारी चीजें सीखी हैं, तो आज का सेशन का ये लास्ट सेशन है, बट इसके बाद और भी सेशन हैं. चलें बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरा. फराह मुशर्रफ नाम है एंड डायरेक्टर हूँ सीक एस्पायर टू लर्न की, MBA ग्रेजुएट एंड लर्निंग एंड डेवलपमेंट में since a decade I'm here, and I'm a certified trainer from Pakistan Society for Development, Training and Development, and from Teach as well. That is the organization of Miss Saima Imran. So वो मेरी भी मेंटोर हैं जिस तरह से आप सबकी मेंटोर हैं. Yes. Okay जी, सेशन में इस तरफ बढ़ते हैं. स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ नंबर्स नजर आ रहे हैं. कैन यू टेल मी कि ये नंबर्स क्या बता रहे हैं? एंड आई वांट के ओके डेट ऑफ बर्थ है, डेट है, कुछ याद आता है, स्पेसिफिक डेट है. यस, समवन हैज सेड APS, ब्लैक डे. बिल्कुल बिल्कुल, अ ब्लैक डे. किस तरह की मेमोरीज आती हैं दिमाग में? द ब्लैक डे, क्योंकि पाकिस्तान हिस्ट्री का, हमारी जिंदगी का एक बहुत मुश्किल दिन था. सॉरो थी, सैड मेमोरीज आती है, हॉरिबल, ट्रैजिक. किसी ने अपने बच्चों को भेजा, किसी ने अपने इकलौते बेटे को भेजा, किसी ने कुछ माओ ने जो है वो जबरदस्ती भेजा. डिवास्टेटिंग मेमोरीज है बिल्कुल. एंड वी स्टिल
feel that grief. हम अभी उन लम्हों को याद करके बहुत उदास भी हो जाते हैं और बहुत that's the saddest memories. कुछ ने जो है वो अपने बच्चों को जबरदस्ती भेजा था और कुछ बच्चे खुद से जबरदस्ती करके गए थे कि नहीं आज तो हमने जाना है. किसी के साथ दोस्त था उसका, कुछ के साथ वही दोस्त, कोई वहां पे कोई किसी का भाई भी था, कोई किसी की बहन थी. They were all innocent people. And हम उस ट्रॉमा से गुजरे हैं. साथ में वहां पे एपीएस में जो बच्चे ट्रॉमा से गुजरे हैं, जो फैमिलीज ट्रॉमा से गुजरी हैं, उसी के साथ साथ हमने भी वो दर्द महसूस किया. ऐसा सबके साथ हुआ, राइट? That was the loss of our country. So was it? मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों से. Yes, it's still in grief, very painful, very true. और वो मेरे ख्याल से हम जिंदगी भर उन वाकयात को नहीं भूल सकते, खास करके हमारे एजुकेशनल सेक्टर से, क्योंकि यस वी आर द टीचर्स, वी आर लाइक वी ऑल एवरी डे गोज टू स्कूल. आप सब लोग स्कूल जा रहे होते हैं. वाज इट लाइक, वाज इट इजियर? हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर पीपल टू कम बैक टू लाइफ? क्या वो उस पेन से निकल पाए हैं या हम भूल गए, या हमारी मेमोरीज में है? कितना मुश्किल है ये. इट्स पेनफुल. यस, बिल्कुल. हम आहिस्ता आहिस्ता हमारी मेमोरी के अंदर बिल्कुल है, लेकिन वो जो पेन है हम अपनी जिंदगियों में वापस आए हैं. हम भूल नहीं सकते उन लम्हात को, उस तारीख को. जब भी हम सुनते हैं हमारे जहनों में वो फौरन से फ्लैशबैक्स होने लगते हैं. बट स्टिल वी आर रेजिलिएंट. हमने उस दर्द को सहा, हमने उस दर्द से स्ट्रेंथ पाई कि नहीं. एंड एवरीवन रिमेम्बर दैट सॉन्ग एज वेल, जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों में से ही किसी ने लिखा था, आर्मी से ही लिखा था. हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है. यस. कभी किसी के साथ ऐसा हुआ, हम सबके साथ जिंदगियों में हुआ है. Those were the very painful moments, I believe. Yes. But हम सबकी जिंदगियों में उससे मिलते जुलते या कहीं ना कहीं हमारे साथ भी जिंदगियों में आप सबने महसूस किया होगा, कोई मुश्किलात आई होंगी, कोई अपना बहुत प्यारा बिछड़ गया होगा, किसी के घर में डेथ हुई होगी, किसी ने अपने दोस्त को खोया होगा, किसी ने अपने जगहों को बदला होगा. एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन होती है. अपने बहुत अजीज दोस्तों को छोड़ के दूसरी जगह मूव करना पड़ जाता है. यस. सो लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. तो कभी ऐसा महसूस हुआ कि तमाम दरवाजे बंद हो गए हैं जिंदगी में, अब कुछ नहीं है हमारी जिंदगी में? ऐसा फीलिंग आई? यस, मैनी टाइम्स. बिल्कुल हमने ऐसा फील किया होगा. जब कभी कभार इस तरह भी होता है कि हम रिजेक्ट कर दिया जाता है, हमें एडवर्सिटी फील करनी पड़ती है. हमारे प्लान्स होते हैं, हम बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं और वो प्लान्स जो है वो कोलैप्स हो जाते हैं. यस, वी फील शैटर्ड. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. सो मैनी टाइम्स. एंड ऑफ लाइफ. तो उस वक्त वो जो लम्हा है जहाँ पे आपने ये फील किया कि यस दोज आर क्लोज्ड,
उससे कम आउट करने के लिए आपने क्या किया? ब्रोकन हार्ट हो गए, डिप्रेशन में चले गए, सैडनेस हो गई? एग्रीड, यस आमिना, दैट्स अ वेरी वेरी शॉकिंग थिंग कि इस तरह की चीजें हमें फेस करनी पड़ती हैं। दोज आर द फेजेस ऑफ डिप्रेशन, और ट्रॉमा से गुजरे होते हैं। लेकिन हम फिर से अपनी चीजों को रीगेन कैसे करते हैं? हमने अभी मिस फातिमा के सेशन में भी सुना कि प्रोएक्टिव की बात हो रही थी, एंड बहुत सारी एनर्जी की बात हो रही थी कि यस प्रोएक्टिव पीपल जो है वो बहुत सारे आगे लेकर चलते हैं, पहले से प्रिपेयर होते हैं। सो डू यू थिंक आर वी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दोज काइंड ऑफ इंसिडेंट्स? जैसे कि मैंने शुरू में बताया आपसे कि एपीएस का तस्करा हुआ। सो क्या हमारे स्कूल्स में हमने कुछ इस तरह से किया कि आगे के लिए इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो? क्या हमने अपने बच्चों को तैयार किया? क्या आपके स्कूल्स में कोई ऐसी ड्रिल्स हुई जहाँ पे हम उनकी सेफ्टी की बात करते, या इस तरह का अगर ट्रॉमा से गुजरे तो क्या उनकी स्ट्रेटजी होगी, या एज अ टीचर्स उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी? यस, कुछ स्कूल्स ने किया और कुछ ने नहीं किया। स्टिल वी हैव बीन इनटू अगेन अनदर ट्रॉमा जो कि पेंडेमिक में आया। स्कूल्स वर क्लोज्ड। हमारे पास बहुत सारे स्कूल्स में स्कूल्स बंद हो गए बाकायदा, जहाँ पे टीचर्स को सफर करना पड़ा, मैनेजमेंट को सफर करना पड़ा, स्टूडेंट्स को सफर करना पड़ा फ्रॉम द लाइक हाउ, बट वी डेल्ट इट। डाउनसाइजिंग हो गई, बिल्कुल कोविड के अंदर सफर किया, हम सब ने सफर किया, बट वी वर यस बट वी वर ब्रेव, वी नेवर गिव अप। हमने उसके सोल्यूशन निकाले ना। क्या सोल्यूशन निकाला उसका? कि आज हम यस वी हैव टू नेवर गिव अप, वी आर फाइटर। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई। ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे लोगों को नहीं आती थी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं छोड़ी। हमने उन ऑनलाइन क्लासेस से अपना ऐसा टूल बना लिया, जिस तरह से हमारे पास ब्लैक बोर्ड्स होते थे। बहुत सारे टीचर्स ने बहुत स्ट्रगल की और अपने आप को प्रिपेयर किया, उस चीज से रेडीनेस रखी कि यस वी नीड टू प्रिपेयर, वी आर नॉट होपलेस। बिल्कुल वीवर यस बिल्कुल, हमने ऑनलाइन रिसोर्सेज के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। हमने उन चीजों को देखना शुरू कर दिया कि यस देयर इज अ होप, देयर इज अ प्लान। और हमने उस टाइम किस तरह की फीलिंग महसूस की थी? हमने उठना है। वी गेन्ड आवर ट्रस्ट कि हमने किसी और के लिए उठना है, हमने अपने बच्चों के लिए उठना है, हमने अपने टीचर्स के लिए काम करना है, हमारे जो कोलीग्स हैं उनके लिए काम करना है, हमने फैमिली के लिए सपोर्ट करनी है। यस वी वर नॉट होपलेस। क्योंकि अगर होप हमने छोड़ दी होती तो हम आज बैठे हुए यहाँ पे इतनी सारी ट्रेनिंग्स नहीं ले रहे होते इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी। यस साइमा कादिर, थैंक यू सो मच। नेवर लूज होप। आई एम सॉरी, मैं आप सबके जो कमेंट्स हैं वो इतनी तेजी से जा रहे हैं कि मुझे पढ़ने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है। यस एग्री, थैंक यू सो मच सादिया, अमरीना। ओके, तो डिसअपॉइंटमेंट भी आता है, एंगर भी आता है, लेकिन उसी सैडनेस के साथ जब हम ये फील कर रहे होते हैं कि हमारे सारे डोर्स क्लोज्ड हैं, तो हम अपसेट भी होते हैं, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं हमारे पास होप होती है एक नई तरफ बढ़ने की। और दिस इज व्हाट द रेजिलियंस इज, द प्रोसेस एंड द आउटकम। क्योंकि हम अडेप्ट कर लेते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन में, हम अडेप्ट कर लेते हैं उन चीजों की तरफ, हम समझने लगते हैं कि ये चीज, वी स्टार्ट बाउंसिंग बैक टू व्हाट वाज द रियल सिचुएशन। हमें उम्मीद होती है, हमें उन चैलेंजेस से निकलने का बहुत ज्यादा हौसला मिल जाता है। वी फील अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस तबस्सुम, एग्जैक्टली, कि हम जब नई चीजें अडेप्ट कर लेंगे, हम न्यू आइडियाज के ऊपर काम कर लेंगे, प्रोएक्टिव हो जाएंगे, सो वी विल बी द विनर्स।
और यही एडवर्सिटी से लड़ने की ताकत जो है हमें स्ट्रेंथन कर रही होती है, साथ में हमें मोटिवेट कर रही होती है कि नहीं, अभी बहुत सारा काम करना है, हमें अपनी नेगेटिव फीलिंग से निकल के पॉजिटिव साइड पे जाना है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि हम खड़े तो हो जाते हैं, बट हम उस जिस ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, तो उस ट्रॉमा में समटाइम्स वी नीड हेल्प समवन। अगर कोई आके हमें दिलासा देता है, छोटी सी बात कहता है, या कोई हमें अंदाजा होता है कि यस देयर इज अ लिसनिंग ईयर, एक एक दर बंद होते हैं तो 100 दर खुलते हैं। बिल्कुल। और उन्हीं 100 दरों में से हमें हमें यकीन होता है कि वो जो एक दर बंद हुआ है तो इसके अंदर हमारे लिए बेहतरी है। सो वी स्टार्ट रियलाइजिंग दोस थिंग्स। अगर कभी कोई उस ट्रॉमा से गुजर रहा है या इस वक्त भी उस ट्रॉमा में है, जो हमने अभी जिक्र किए हैं, तो हमने होप नहीं छोड़नी है। हमने अपने पास उन चीजों को, उनसे लर्निंग जो हुई है, हमें वो लर्निंग स्टार्ट कर देनी है, लिखना कि यस हमें इससे क्या लर्निंग हुई है। और यही वाली लर्निंग हमें अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफर करनी है, बीइंग एन एजुकेटर। और वो किस तरह करेंगे? एनी आइडिया? पॉजिटिविटी मैटर्स, यस एग्जैक्टली। अल्लाह की तरफ से जो होता है बेहतर होता है, बिल्कुल जी। आई ओनली मेमोराइज मी वन थिंग। ओके, यस। तो इस पॉजिटिविटी में आप कैसे, ये बच्चों के अंदर कैसे सिखाएंगे कि यस बीइंग रेजिलिएंट? क्योंकि हम बच्चों को आजकल क्या सिखाते हैं? क्या हम उनको सिखा रहे हैं कि बच्चे जिद बहुत करने लगे हैं? क्या हम उनको ये सिखा रहे हैं कि बेटे अगर फेलियर हो जाएगा तो कोई बात नहीं, इससे आप इस फेलियर से आगे बढ़ जाएं? यस, बिल्कुल, बाय डूइंग। अल्लाह की मर्जी ही बेहतर है, अल्लाह की मर्जी है बेटा। अच्छा ठीक है, लेकिन हमें ये कैसे सिखाना होगा? क्या अल्लाह की मर्जी है हम बोलेंगे और उनकी समझ आ जाएगी बच्चों के? हमें उनको सिखाना होगा। क्योंकि हम थोड़ा सा यहाँ पे ये एक बात को समझिएगा कि हम बच्चों में वो चीज डेवलप उस तरह से नहीं कर रहे हैं। लाइक बच्चे जिद कर रहे होते हैं कि यस मुझे जो है वो स्क्रीन टाइम, बच्चे आजकल मोबाइल के पीछे बहुत होते हैं, ठीक है, एंड कॉन्स्टेंटली, खास करके छोटे बच्चों को स्क्रीन नहीं देनी चाहिए। लेकिन आई रियली हैव सीन दिस के बच्चों को मोबाइल स्क्रीन दे दी जाती है एंड दे आर लाइक उसके बगैर खाना नहीं खाते। एंड जब उनसे वो चीज छीन ली जाती है, दे स्टार्ट क्राइम। चैलेंजिंग बिहेवियर्स की बात हो रही थी ना कल सनिया के उसमें। यस, लेकिन वो उनके अंदर वो चीज पैदा नहीं होती कि अच्छा मुझे कैसे उस एडवर्सिटी को एक्सेप्ट करना है। दे लाइक दे शैटर्ड। बच्चे बहुत जल्दी सीख भी जाते हैं। जो अभी जो बिल्कुल छोटे वाले बच्चे हैं उनके अंदर ये चीज कम होती जा रही है, लेकिन जो थोड़े बड़े जेन अल्फा वाले बच्चे हैं इस वक्त 20s में, 10 to 20 years में, they are like more into, they are more resilient than us, I think, I believe। ऐसा ही है, accepting the situation, exactly। तो चलना देखते हैं थोड़ा सा। ओके, यस, ओके जी। एक ये रेजिलियंस अम्ब्रेला होती है, ठीक है। हम इंटीग्रेटेड अप्रोच है जहाँ पे हम देखते हैं कि अच्छा भाई हमारी कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं और हमें यही चीज बच्चों को भी सिखानी है कि प्रॉब्लम आती है तो हम सबसे पहले कहाँ पे जाते हैं? किसको बोलेंगे आप? पार्ट ऑफ लाइफ तो है, किसको जाके बोलेंगे? एक इंडिविजुअल सतह के ऊपर होती है, देन फैमिली में लोग होते हैं, कम्युनिटी में लोग होते हैं। हम जाते हैं, हमारी मदर को सबसे पहले जाके बताएंगे, पेरेंट्स को जाके बताएंगे, अम्मी ये वाला मसला हो गया था आज, मुझे ये बहुत फेलियर वाली सिचुएशन है, मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मुझे कुछ होप नहीं है, पेरेंट्स नहीं है। अपनी टीचर को जाके बताते हैं बस बच्चे कि मिस हमारी मम्मा जो है वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप दुआ कीजिएगा, है ना। वो अपने टीचर से भी शेयर कर रहे होते हैं, अपने पेरेंट्स से शेयर कर रहे होते हैं। और इवन हमारे पास मेंटोर्स होते हैं, एग्जैक्टली फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई एक ऐसा होता है जिसको हम अपनी जाके बात
बताते हैं और वो दे आर द एक्चुअली सुनने वाले कान बन जाते हैं हमारे हमको सुनते हैं, समझते हैं, हमें वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे रहे होते हैं जो कि हमें उस टाइम चाहिए होती है। हम अपने आप को एजुकेट करते हैं। अगर हमने कोई एडवर्सिटी फील की है तो हम अपने आप को एजुकेट करना शुरू कर देते हैं कि यस, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आएगी दोबारा से तो मैं किस तरह से इसको मूव करूंगा, मुझे क्या करना होगा। सी आई विल बी टेकिंग क्वेश्चंस लेकिन इन द एंड, ठीक है। यस, एजुकेशन लेते हैं हम, लाइवलीहुड लेते हैं, बिल्कुल। बाय देयर सपोर्ट वी फील रिलैक्स, हमको सुकून मिल जाता है, हमें होता है कि यस इससे हम निकल जाएंगे। मैंने इसको बता दिया है, अब ये या तो मुझे कुछ छोटी सी टिप मुझे मिल जाएगी या फिर मुझे सुकून एटलीस्ट मिल जाएगा, और मैं अपने आप को बहुत जो मैंने इंफॉर्मेशन उसको बताई है बता बता के मुझे उससे रिलैक्स फील होगा कि यस, और उससे बातचीत उसी इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन में मुझे बहुत सारे न्यू आइडियाज मिल जाएंगे कि मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। टेकिंग ओपिनियंस ऑफ अदर्स, बिल्कुल मेरे अंदर ठहरा हुआ जाएगा, जो मैं उस वक्त एक थ्रेशोल्ड के ऊपर मेरा दिमाग होगा जहाँ पे मेरी सोचें जो है वो कहीं नहीं होंगी, और मैं उन चीजों से निकल के उस इंफॉर्मेशन को बता के उस अम्ब्रेला के अंदर आके मैं अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस करूंगी, आइडियाज जनरेट हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो हम ये सारी चीजें तो हमें किस तरह से अपने बच्चों के अंदर ये डेवलप करनी है, रेजिलियंस, साथ में अपने स्टूडेंट्स के अंदर और साथ साथ अपने अंदर। बिल्कुल, फील प्रोटेक्टिव, किस तरह से फील प्रोटेक्ट करके करेंगे जब हमें सॉल्यूशंस मिलना शुरू हो जाते हैं। हमें होता है ना कि समटाइम्स हम अपने क्रिएटर से अपनी बात का तस्करा करते हैं, या समटाइम्स जब हमारे जो अम्मी हैं, अब्बू हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको बात करके हम फील करते हैं यस। तो हमें कोई ना कोई एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम साथ में अच्छा, किसके ऊपर ट्रस्ट, अम्मी अब्बू पे या अपने उस फ्रेंड के ऊपर ट्रस्ट करने की वजह क्या होती है? ऑप्शंस मिल जाते हैं, अल्टरनेट ऑप्शंस को डिस्कस करके होप मिल जाती है। ट्रस्ट, एग्जैक्टली। हमें उनके ऊपर ट्रस्ट होता है कि ये हमें रिजेक्ट नहीं करेंगे, ये हमारी बात को सुनेंगे, ये हमें मजीद डिमोटिवेट नहीं करेंगे, जजमेंटल नहीं होंगे। एग्जैक्टली हमें उनके ऊपर फेथ होता है कि ये हमारे अपने हैं, और हमें ये भी यकीन होता है कि ये जो भी हमें इंफॉर्मेशन देंगे, अगर वो हमारे अपने नहीं भी हैं, समटाइम्स हमें उस ट्रॉमा से निकलने के लिए एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत पड़ जाती है ना, हमें साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ जाती है, समटाइम्स समटाइम्स हमें किसी काउंसलर की जरूरत पड़ जाती है। तो हमें पता होता है कि यस, ये हमें काउंसिल कर रहे हैं तो इनका इस चीज के अंदर तजुर्बा है, वो हमें इमोशनल सपोर्ट दे रहे होते हैं कि यस, उस ट्रॉमा से निकलने के लिए। तो उस ट्रॉमा से निकलने के लिए और वापस अपनी जिंदगी के अंदर वापस जाने के लिए हमें एक चीज की बहुत शिद्दत से जरूरत होती है, जो कि बेसिकली पॉजिटिव थिंकिंग, अगेन प्रोएक्टिव, बीइंग प्रोएक्टिव रहने की, मेंटल पीस। क्योंकि अगर हम अपने पास वो ग्रजेस रख के बैठे रहेंगे कि नहीं, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, हमेशा मुझे ही क्यों रिजेक्शन मिलती है, हमेशा मुझे ही क्यों डांटा जाता है, अगर मैंने ब्लेम गेम शुरू कर दिया अपने अंदर, जो मेरी सेल्फ टॉक है, यस, नेवर होल्ड दोस ग्रजेस, तो मेरा क्या हाल होगा कि मैं उस आई एम नॉट बीइंग रेजिलिएंट है, मैं उस चीज से बाहर ही नहीं आ पाऊंगी। ठीक है, मैं अपने काम कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन आई एम नॉट बीइंग रेजिलिएंट, आई एम डिसअपॉइंटेड। तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन जमा होने लगेगी। तो ये मुझे सीखनी कैसे कैसे डेवलप करूं मैं ये सारी रेजिलियंस, और खास करके अपने जो हमारे बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, हम अपने बच्चों के अंदर कैसे ट्रांसफर करें, अपने स्कूल्स में, अपनी क्लासरूम में अंदर कैसे लेके जाएं अपने स्टूडेंट्स के साथ। यस,
सबसे पहले तो अपने स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करें कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है. आर यू रेडी फॉर डूइंग दैट? प्रोफाइलिंग करते हैं आप लोग? साइमन ने एक सेशन में बताया था अपने कि अगर आप बच्चों की प्रोफाइलिंग करेंगे तो उसके कितने सारे फायदे होंगे. यू नो अबाउट योर एग्जैक्टली अबाउट द स्ट्रेंथ्स, अबाउट देयर जो भी उनकी वीकनेसेस हैं, उनके ग्रे एरियाज हैं. यस, स्टूडेंट्स प्रोफाइलिंग कुड बी वन थिंग. या फिर उनका स्वॉट एनालिसिस कर लें, जहाँ पे स्वॉट मीन्स द स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड व्हाट स्टैंड्स फॉर ओ. कौन बताएगा मुझे? ओ एंड टी. ओ एंड टी क्या होता है? पॉजिटिवली? नो. SWOT, yes. Observation? No. Yes, Usma, you are very much right. It is opportunity. उनकी क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं. एक बच्चों के साथ और एक अपना स्वॉट एनालिसिस करते रहें, जहाँ पे आप 4 क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करेंगे एंड वहां पे आप अपनी स्ट्रेंथ्स लिखेंगे, अपने बच्चों की स्ट्रेंथ्स लिखवाएं, उनसे खुद ही लिखवाएं. दैट्स देयर वर्क. ठीक है ना. उनकी एक हैबिट बना लें. अगर उनकी हैबिट शुरू से होगी तो दे विल बी लाइक मोर रियली नोइंग अबाउट देमसेल्फ. जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली बात हो रही है ना, कि हम अपने आप को कैसे जाने, तो वो एक शुरू से हैबिट डेवलप हो जाएगी. एंड टाइम टू टाइम वी रियलाइज कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारे अंदर क्या है. सो स्टार्ट डूइंग दैट थिंग इन योर क्लासरूम्स एज वेल. तो स्वॉट एनालिसिस करना शुरू कर दें. स्टूडेंट्स प्रोफाइलिंग इज अनदर वे, जहाँ पे आप स्वॉट अगेंस्ट स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. ठीक है, कि थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं डिसीजंस के अंदर. यस, अपॉर्चुनिटीज मस्ट. आप उनको उन अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता सकते हैं. दे कैन आइडेंटिफाई बाय देमसेल्फ. शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होगा उनको करना, लेकिन जब उनकी एक हैबिट डेवलप होना शुरू हो जाएगी, देन दे विल बी इजियर टू डूइंग सो. ठीक है, बट यू विल बी द फैसिलिटेटिंग देम. एग्जैक्टली. ठीक है. Then students profiling could be another way, जहाँ पे आप स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ पता लगा सकते हैं. ठीक है. यस, वेरी ठीक. थैंक यू. ओके, देन डूइंग विद द स्मार्ट गोल्स. उनके स्मार्ट गोल्स जरूर सेट कराएं. क्या गोल्स हैं, रादर देन के एकेडमिक, कि हम एकेडमिक गोल्स तो सेट करा रहे होते हैं ना, कि अच्छा भाई हम उनको एकेडमिक प्रेशर दे रहे होते हैं. बट व्हाट अबाउट द लाइफ स्किल्स? अगर कोई फेल हो जाता है तो वो इतना ज्यादा हम उनको प्रेशर दे रहे होते हैं बच्चों को कि दे फील स्टक. अगर उनके मार्क्स कम आ गए या फेल हो गए किसी वजह से, तो वो तो फिर बिल्कुल डिजेक्टेड फील हो जाते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं बच्चे, उस एडवर्सिटी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते. तो इंस्टेड ऑफ having those academic वाला achievement, लेकिन उनके आइडेंटिफाई जरूर कराएं कि वो पर्सनल गोल्स क्या होंगे. एंड बीइंग दैट गोल्स, स्मार्ट गोल कैसे बनेंगे? Do you know the difference between smart goals? Yes, Serena has already the answer. That's specific, measurable, achievable, realistic and timely. Smart goals बनाना सिखाएं बच्चों, जहाँ पे वो अपनी प्रोग्रेशन कर रहे हो, रादर देन के एक भीड़ चाल का शिकार होके कि नहीं उसके मार्क्स इतने आए थे तो मुझे उससे ज्यादा लेने हैं. नो, मेरा कंपटीशन अपने आप से है, किसी और से नहीं है. हर बच्चे का इसी तरह है. उनको इस रैट रेस से निकालेंगे, जो ग्रेड रेस, एक रैट रेस लगी हुई है ना, कि नहीं हमारे बच्चे जो है वो टॉप ग्रेडर्स ही होंगे. दूसरों से कंपेयर ना करें एटलीस्ट उनको. ठीक है, अपने आप से कंपेयर करना सिखाएं कि यस आप यहाँ पे थे, you were here and now you are able to find that you have set your goal really smartly. और उनको उन स्मार्ट गोल्स को बनाने के लिए हेल्प आउट करें. किस तरह के होंगे स्मार्ट गोल्स? एनी आइडिया? जी बिल्कुल, पेरेंट्स भी कर रहे होते हैं और समटाइम स्कूल मैनेजमेंट भी कर रही होती है कि यस हमारे बच्चों को जो है वो टॉप ग्रेडर्स ही होंगे, हमारा स्कूल इज द टॉप 1. ठीक है, ग्रेड्स अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं, बट
उनको एडवर्सिटी भी सीखना जरूरी है कि अगर खुदा ना खास्ता वो फेल होते हैं तो फेल होने के बाद वापस से कैसे लर्निंग होनी चाहिए. लर्निंग इज इम्पोर्टेंट, नॉट द ग्रेड्स, टू इंक्रीज देयर कॉन्फिडेंस. एग्जैक्टली. ठीक है, यहाँ पे मेरे पास दो छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स हैं. आई विल डू बेटर इन नेक्स्ट टर्म. ये एक छोटा सा गोल है. दिस इज अ गोल, बट डू यू थिंक रियली इट इज अ स्मार्ट गोल? बहुत वेग है ना. We train them for time management. Yes, we need to. But this could be the smart goal. Okay, next morning, I have mentioned, like the child has mentioned in this statement, in the next morning period, I will take notes carefully. जहाँ पे उसने smartly specify कर दिया है कि मैंने कब से लेना start करती है, और and then review these notes at least 2 days before. Time specify कर दिया है, and before tests and quizzes, so that I can ask teacher the question I don't understand. Gulhena, yes, failure is the first step towards success. हमें उनको यही सिखाना है कि कोई बात नहीं, अभी अगर फेल हो गए हो कोई बात नहीं, लर्निंग इज इम्पोर्टेंट. आपकी लर्निंग हुई, आपको पता लगा आपने क्या मिस्टेक की थी, आपने किस वजह से जो है आप फेल हो गए, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट. बिल्कुल उनकी लर्निंग एबिलिटीज को देखते हुए काम करना है. हर बच्चे की अपनी लर्निंग एबिलिटी है, जैसे कि यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग के अंदर साइमा ने शेयर किया था. हर बच्चा डिफरेंट है और उसका एक अलग तरीका है सीखने का. बट वी नीड टू डिफाइन दैट. फेलियर मेक अस मोर एक्सपीरियंस. एग्जैक्टली, फेल इज पार्ट ऑफ लर्निंग. बिल्कुल ठीक है. तो उनको हमने स्मार्ट गोल्स बनाने हैं. देन वी नीड टू लर्न दिस के यस, मॉडल लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स. कोई बात नहीं, गलती हो गई, उस फेलियर को एम्ब्रेस करना सिखाएं, ऑनर करना सिखाएं कि यस दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. कोई बात नहीं, आप फेल हो गए, लेकिन क्या लर्निंग थी. उनको वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें कि वो अपनी मिस्टेक से सीखना शुरू कर दें. हम प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं ना बच्चों से बहुत सारे, तो होता क्या है, वो पेरेंट्स बना के ले आते हैं एंड हम उसके ऊपर बहुत सारी क्लैप कर देते हैं. ऐसा ही होता है ना. या फिर बहुत सारे जगह पे हम ये भी करते हैं कि हम टीचर्स जो हैं वो खुद ही से बच्चों के प्रोजेक्ट बना के शो कर रहे होते हैं कि यस यू हैव डन दिस, डोंट डू दिस प्लीज. Yes, show proactive behavior on failure as well. It will happen. We will fail because failure is part of life. Welcome. उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दें कि यस, कैसे प्रोवाइड करेंगे वो अपॉर्चुनिटी. What I do is, yes, failing is experience. बिल्कुल एक्सपीरियंस है. अपनी एग्जांपल देती हूँ मैं. जैसे अगर मेरे पास कुछ बच्चे होते हैं जो कि उनको मैं अपॉर्चुनिटी इस तरह से प्रोवाइड करती हूँ कि यस, आप मुझे कोई डेडलाइन बता दो, आप इस टाइम पे नहीं कर सके थे, आई लिसन टू देम, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट. अगर मुझे लगता है कि यस दैट वाज द ट्रू रीजन, सही है और मैं उसको अकोमोडेट कर सकती हूँ, सो कोई बात नहीं. आई एम गिविंग यू द अगेन वन मोर चांस, गिव इट. जो मेरा सर्कल ऑफ कंसर्न है ना, अभी आपने सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सर्कल्स पढ़े थे कि मेरे सर्कल में कौन कौन सी चीजें हैं जो कि मैं कर सकती हूँ. सो इन माय सर्कल व्हाट आई कैन डू फॉर देम, आई डू दैट एंड गिव देम दैट अपॉर्चुनिटी कि वो दोबारा से उस मिस्टेक को सही कर सकें और आगे बढ़ सकें. सो उनको भी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा. यस, व्हाट इज इन माय कंट्रोल. Exactly, Batul. Give them time for expressing their ideas. किस तरह से मूव करना है, ठीक है. Yes, and encourage responsible risk. ये क्या चीज नजर आ रही है आपको स्क्रीन पे, कौन बताएगा? Some parents always pressurize to get position. Exactly. Yes, this is a stress ball. इसका काम क्या होता है स्ट्रेस बॉल का?
स्क्विशी बॉल, स्ट्रेस बॉल, बाउंसिंग बॉल। डाइवर्ट अटेंशन क्या करती है स्ट्रेस बॉल? रिलीज टेंशन कर देती है, ठीक है। आई डोंट हैव दिस स्ट्रेस बॉल राइट नाउ, बट व्हाट हैपेंस इज जब आप इसको स्क्वीज करते हैं, ये फौरन से तो नहीं, लेकिन थोड़ी जल्दी ये वापस अपनी असली पोजीशन के ऊपर वापस आ जाती है। इट बाउंस बैक एंड टर्न्स बैक, इट बाउंसेस अंडर एंड देन व्हेन यू रिलीज इट, इट बाउंसेस बैक टू इट्स रियल पोजीशन, ठीक है। इसके अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो हमें भी वही बच्चों के अंदर यही वाली बाउंसिंग बैक वाली जो ट्रेट है ना, यही डेवलप करना है कि बट हाउ? बाय एनकरेजिंग रिस्पॉन्सिबल रिस्क लेने हैं आपने। अगर मैं कोई काम करूंगी नहीं तो उसमें रिस्क क्या होगा? मुझे स्ट्रेस लेना है। स्ट्रेस मेरे लिए कुछ स्ट्रेस अच्छा भी है, पॉजिटिव स्ट्रेस भी है। अगर मैं वो स्ट्रेस नहीं लूंगी और मैं वो रिस्क नहीं लूंगी तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी? So encourage them for taking those risks in life. कोई बात नहीं, स्ट्रेस बॉल है, ठीक है ना। तो हमने इसी चीज को बच्चों को भी यही सिखाना है कि यस, आपने रिस्क लेने हैं, आपके पास डेडलाइन है एंड यू नीड टू टेक दोस रिस्क। कोई बात नहीं, अगर फेल हो जाओगे तो मैं पीछे हूं। मिस्टेक हो जाएगी, कोई बात नहीं, हम उसको सही कर लेंगे, मिलके सही कर लेंगे, ठीक है ना। तो वी हैव दैट दिस सोल्यूशन फॉर दैट। और जब हम उनको इस काबिल बना देंगे, वो उन रिस्क में अगर वो गिरेंगे भी और उस चीज को नहीं भी हासिल कर पाएंगे, सो दे हैव दैट एबिलिटी टू सर्वाइव इन डिफरेंट सिचुएशंस। बिल्कुल साइमा, 100% एग्री। जब तक गिरेंगे नहीं तो उठेंगे कैसे? तो उस वक्त हमने चैलेंजिंग बिहेवियर्स में जो आपने सीखा था ना कि बच्चे जो है वो डिस्ट्रेस में आ जाते हैं और बहुत चैलेंजिंग बिहेवियर्स दे रहे होते हैं, तो हमने उनके साथ फिर वही वाले चीज करनी है, अप्लाई करनी है कि यस, कोई बात नहीं, अब इसका सोल्यूशन कैसे है, चलो आओ मिलके सोल्यूशन की बात करते हैं। खराब हो गया ना, तो व्हाट कुड बी द सोल्यूशन? बी रिस्पॉन्सिबल, हैव दैट करेज टू टेक बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग। मैंने किया है ना, तो मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ उसको सही करने के लिए। मुझसे गलती हुई है अगर तो, एंड एक्सेप्ट, अगर आपसे गलती होता है तो एक्सेप्ट दैट फ्रॉम योर एंड एज वेल कि अच्छा हाँ मुझसे गलती हुई है। इफ यू नेवर ट्राई द आंसर इज ऑलवेज नो। बिल्कुल, आपका आंसर भी, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, मिस्टेक्स नहीं करेंगे, आप सीख नहीं सकेंगे, ठीक है। और उस एडवर्सिटी को सीखने के लिए ये बहुत जरूरी है। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमने अपनी क्लासरूम्स के अंदर करानी है, और बहुत ज्यादा हम लोग इमोशनल लर्निंग की बात करते हैं, इमोशनल वेलबींग की बात करते हैं, तो बच्चे टेंट्रम से बहुत गुजर रहे हैं। इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात हुई इमोशंस के बारे में। तो बच्चों को इमोशंस पहचानना सिखाना है हमने कि व्हेन दे आर हैप्पी, व्हाई दे आर सैड। उनके लिए सैड होना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हैप्पी होना है, क्योंकि सारे इमोशंस जो हैं वो हमारी लाइफ का हिस्सा हैं। अगर सैड है तो उस सैडनेस को कैसे हील करना है, हमने उनको ये सिखाना है, रादर देन कि हम उनको ये सिखाएं कि नहीं, सैडनेस होनी ही नहीं है जिंदगी में। क्योंकि अगर कोई चैलेंज नहीं आएगा, वो उस हैप्पीनेस को फील नहीं कर पाएंगे जब वो कभी हैप्पी होंगे, ठीक है ना। हमारे पास नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं, हमने उनको ये सिखाना है कि नेगेटिव इमोशंस को किस तरह से ओवरकम करना है। अगेन वही वाली बात है कि अगर हम ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं, हम नेगेटिव इमोशंस को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। बच्चों को कुछ चीजों के ऊपर टोकना टाइमली जरूरी होता है, लेकिन एक तरीके से, बीइंग प्रोएक्टिव,
बहुत हम्बली उनको समझाएं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. ट्राई फेल राइज अगेन. यस. ठीक है ना. मेरी बॉल गुम हो गई है, मुझे मिल नहीं रही, मैं क्या करूं. बच्चा सैड हो गया है, आओ मिलकर ढूंढते हैं. बच्चे मैस कर देते हैं, हम उनको डांट देते हैं कि क्या तुमने हर वक्त मैस मचाया हुआ है. लेकिन हमने तो वो आदत ही नहीं डेवलप की ना उनके अंदर. क्या हमने उनको फील कराया कि ये जो आपने मैस किया है इसकी सफाई भी करनी है. नो. तो किस तरह से करें इसको. किस तरह से रियलाइज कराएंगे उनको कि आपने गलत काम किया है, विदाउट लाइक शाउटिंग ऑन देम. दूसरी से पहले करते वो ज्यादा अच्छी बॉल है. हाँ. फर्स्ट वी हैव टू चेंज अवर सेल्फ. एग्जैक्टली, वी नीड टू सी अवर सेल्फ फर्स्ट. और साथ में जो है वो फिर उसको अप्लाई करें. एंड देन बच्चों के साथ भी अप्लाई कर दें. उनको प्यार से समझाएं विदाउट बीइंग जजमेंट. लेट्स डू इट टुगेदर. एक हैबिट बना लेना. जब थोड़ी सी हैबिट बन जाएगी, बच्चे शुरू से करने लगेंगे, सो बड़े होके भी उस चीज को हम भी समझने लगेंगे. चेंज योर बिहेवियर. दैट्स इट. बिल्कुल. सेट एन एग्जाम्पल बाय डूइंग माई सेल्फ फर्स्ट. लेकिन क्या ये सही है अगर मैं खुद से कोई काम करना शुरू कर दूं और बस बच्चे को जो है मैं स्कोल्ड करूं कि नहीं आपने ये काम नहीं किया है इसलिए ये मैंने किया है. इज इट द राइट थिंग, राइट वे? नो. सो व्हाट शुड बी द थिंग, हाउ शुड आई डू दैट. क्या बिहेवियर होना चाहिए मेरा. डोंट यूज harsh words. Humbly, politely, change yourself first. Okay. Involve them. Yes. By involving them, let's do it together. हाँ, मैं भी साथ कराती हूँ. वो जो लीडर वाली स्पेशलिटी होती है ना कि यस, बीइंग द लीडर इज गोइंग अलोंग विद रादर देन बीइंग द मैनेजर, जो कि सिर्फ मैनेज कर रहे हैं एंड पीछे हैं, साथ नहीं है. ज्वाइन देम विद यू. उनको अपने साथ लगा दें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर दें, उनके इमोशंस को लेबल कराएं कि यस ये आप इस वक्त सैड फील कर रहे हो, उसकी क्या वजह है. आप इस वक्त हैप्पी हो तो हैप्पी होने की क्या वजह है. आप इस वक्त डिस्ट्रेस हो, गुस्सा आ रहा है, और वो एंगर क्यों है, वजह क्या है. उस एंगर को भी तो समझना जरूरी है ना. आप लोग कैसे कराते हैं अपने बच्चों को इमोशंस फैसिलिटेट करके. यस. हु इज क्विक talking to them, giving you a time. That's the very important point. Exactly. कि उनको टाइम देना है हमें उस चीज को समझने के लिए. Yes, give them attention when they need that attention. Love and time. Exactly. बिल्कुल. बच्चे जितना अपनी टीचर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ चीजों के अंदर इन्वॉल्व होके सीख रहे होते हैं, वो वाली लर्निंग शायद बुक्स के थ्रू नहीं मिल रही होती, उस एंगेजमेंट के थ्रू मिल रही होती है. यस. उसी तरह से वो अपने इमोशन भी समझने लगेंगे. और जब वो उनको अपने बारे में पता होगा, जो हमने पहले काम किया था कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, जब उनको सेल्फ अवेयरनेस होगी तो हमें इमोशन समझने में भी हेल्प आउट हो जाएगी कि बच्चों को अपने इमोशंस भी समझ में आने लगे. ठीक है. यस. ओके जी. अब ये एक छोटी सी स्टोरी है. ठीक है. इस पिक्चर को जरा गौर से देखिएगा और मुझे जरा बताइएगा हो क्या रहा है यहाँ पे. बच्चे कच्ची मट्टी की तरह होते हैं. अच्छा, मैं वापस से थोड़ा सा बैक जाती हूँ एंड
let me repeat it. So label their emotions, उनके label emotions करना है हमने, और उसके अलावा encourage responsible risks, and third one, model learning by mistakes, from mistakes. The fifth one, setting the goals, SMART goals. And the fifth one, identify students' strengths and having their profiling. Okay? And this is about developing the resilience skill. Yes, अब मैं एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ ही करते हैं, ये वाली स्टोरी, ठीक है? इस तस्वीर को देखिएगा गौर से और बताइएगा यहाँ पे हो क्या रहा है। दो कोई जानवर बंधे हुए हैं, और ये कौन से जानवर हैं? मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। एंग्री, डोंकी है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, दोनों बात भी नहीं कर रहे हैं, रूड भी है। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, एंग्री है। ओके, अब क्या करना, क्या कर रहे हैं? पहले तो खड़े हुए थे सिर्फ, अब क्या कर रहे हैं? डोंट वांट टू मूव टुगेदर। हाँ जी, दोनों वो उस तरफ मुंह करके जा रहा है, दे आर पुलिंग देमसेल्फ अलग अलग डायरेक्शन में, नाराज हैं। नहीं, पूरी पिक्चर को देखिएगा, दोनों कुछ करना चाह रहे हैं, पुल तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह क्या है उस पुलिंग करने की? ग्रास, एग्जैक्टली सना, दिस इज द ग्रास, दे वांट टू ईट ग्रास। यस, बिल्कुल। तो क्या वो खा पाएंगे? देयर फोकस इज फूड एक्चुअली। क्यों नहीं खा पाएंगे? ओके, ओह, अब क्या हो गया? ज्यादा एग्रेसिव हो गए? यस, हाँ, क्या करना चाहिए इन दोनों को? ट्राइंग देयर बेस्ट। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है? अब किस किस जगह पे पहुंच गए दोनों? दे आर टॉकिंग, डिस्कसिंग, सेम प्लेस पे खाना चाहिए, दोस्ती हो गई है। यस, दे आर टॉकिंग ऑन द सेम पेज, एग्जैक्टली, दोनों की फ्रेंडशिप हो गई है भाई। दे आर कम्युनिकेटिंग एंड दे आर नाउ इन द मोड ऑफ सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि हम कोलैबोरेट कर लेंगे अगर, तो टीम वर्क खा पाएंगे। यस, बिल्कुल। So they are eating the grass finally from one side. Sounds like our politicians. Okay. So yeah, बिल्कुल जी। And they are eating more actually, क्योंकि उन्होंने वहां की ग्रास भी खा ली है और यहाँ की ग्रास भी खा ली है। Now they are like partnering themselves, और उन्होंने ये सीख लिया है कि मुझे इस सिचुएशन से फायदा नहीं है अगर मैं नेगेटिव बिहेवियर जारी रखूंगा, और उस एडवर्सिटी को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। कि हम दोनों अलग डायरेक्शन में बंधे हुए हैं, जब तक कि हम म्यूचुअल नहीं करेंगे, ज्वाइंट हैंड्स नहीं करेंगे, तो किसी का फायदा नहीं होगा। सो एक्चुअली हमारी लाइफ में जब एडवर्सिटी आती है, तो हमने एक छोटा सा सिंपल फार्मूला शेयर करती हूँ। दैट्स द डोडा फार्मूला, एंड दैट वाज शेयर्ड बाय खालिद अनम, एंड दैट वाज डोडा फार्मूला। यानी कि आपने डिटैच करना है, देन जो भी आपके पास एडवर्सिटी आई है, आपने थोड़ी देर के लिए अपने आप को डिटैच कर लिया, देन आपने ऑब्जर्व किया उस चीज को, टेक अ स्टेप बैक एंड ऑब्जर्व व्हाट्स द सिचुएशन, कहाँ पे मैं लाया कर रहा हूँ, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी क्या वीकनेसेस है, मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, यू ऑब्जर्व and then again D, that is detach, observe and deduce. आप कुछ सोचेंगे उसके बारे में, एंड आप कुछ डिसीजन मेकिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, एंड देन फाइनली एक्ट कर जाएंगे। एग्जैक्टली।
ठीक है, तो आपने सिंपल छोटा सा फॉर्मूला, इट टेल्स अस अबाउट दैट एडवर्सिटी एंड बीइंग रिजिलिएंट, और यहाँ पे मैं एक छोटी सी अगेन resilient, the most resilient story of the session आप लोगों से शेयर जरूर करूंगी कि आज वो बच्चे जो कि एपीएस के बच्चों में से एक बच्चा जिसका नाम अहमद है, ही इज इनटू लाइक उस बच्चे के साथ उस बच्चे का भाई उस हादसे में शहीद हुआ था, एंड he had wounds in his arms, and now after 2016, now in 2022, he is in Oxford University and the first ever Diana Award winner. So that's the resilient, most important thing that he has told us by his actions. कि वो लम्हे वहीं होते हैं, लेकिन हमने अपनी जिंदगी में किस तरह से आगे बढ़ना है। वो स्कार्स कभी नहीं जाएंगे, लेकिन हम अपनी जिंदगियों में आगे कैसे बढ़ें। That's the mashallah a brilliant bravery story. You can search his resilience story on Google. It just Google करिएगा and then you will be able to see about him. Ahmed Nawaz, a 20-year-old boy now, mashallah, and that's all about today's session. सीख को ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा, एंड प्लीज टेक्निकल सपोर्ट पैडलेट फॉर्म्स जरूर शेयर कर दीजिएगा, एंड वी आर शेयरिंग उसके ऊपर अपना प्लीज नेम के साथ जो है अपना फीडबैक जरूर लीव कीजिएगा ताकि आपकी अटेंडेंस भी आ जाए। दिस इज द फॉर्म एंड लेट मी शेयर दिस, सॉरी, ओके, यस। Any questions are welcome now, and we have 3 more minutes that we can answer those questions. If you have any questions, then you can ask by raising your hands. Thank you. No questions. Okay. एंड अनाउंसमेंट फॉर यूट्यूब, जो लोग यूट्यूब के ऊपर हैं वो काइंडली अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर लें, अदरवाइज आपके साथ यूट्यूब का लिंक कमेंट बॉक्स में शेयर हो रहा होता है, वहां से आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, बिकॉज वहां पे लिंक जनरेट नहीं हो पाता है कमेंट में, ठीक है। एंड बी विद अस, आज के दिन का ये लास्ट सेशन है, बट वी हैव 4 more days ऑफ ट्रेनिंग्स, ठीक है, उनको भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। दैट्स फ्रॉम वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सो मोर ट्रेनिंग्स आर कमिंग टू यू, एंड वो भी बहुत इंटरेस्टिंग सेशंस होंगे इंशाल्लाह, एंड प्राइज विनर्स विल बी अनाउंस्ड शॉर्टली। सो ओवर टू यू शबीना। यस, Shana, Sabah, would you like to answer question something? Okay, let's stop sharing. You really engage and attach us emotionally with you. Appreciate the way you train us today to deal with our different emotional states and traumas. We all should implement this learning in our life and in the peoples we are surrounded with. Thanks to spread the positivity amongst all of us in the end of this training day 3. Thank you so much, ma'am, for that. So now is the time to announce our course partner. It's Edmount. Learn to grow under the leadership of Maruk joined Edunext International Conference as course partner. Edmount is an educational consultancy organization which aims to provide people with the opportunities and resources to learn. Model education empowers learners with the tools they need for both traditional and non-traditional careers, empowering them with skills in creativity, problem solving, research, critical thinking, and leadership is what this organization is working for. We welcome Edmount on this platform. And the second sponsor with us is Femtor.
Femtor is a professional development company with operations both in Germany and Pakistan under it. Under the leadership of Aida, the organization has already marked its contribution through a YouTube channel which inspires every individual to stay motivated and grow. We welcome Femtor on the platform of Edunext to take their mission forward. And I thank you everyone. Thank you our audience. Thank you our participants for consistently attending the sessions with all your energy. Time to announce the winners from the 4th session today. So here is our first winner, Ramza Shakir from the Beacon House School System. Applause for her. The second is Sarvat Faraz from Innocent Schooling System. Congratulations, Sarvat. And then Sakina Jabin from Karachi Public School. And now Humaira Mansoori from Credo School. Other winner is Yamna Aslam from Sunbright Academy. And Salma Yasser from The Smart School. Congratulations. Congratulations all. And winners are requested to please share your picture with conference coordinator. We will share the invitation to the award ceremony by the end of training to confirm your reward. Well, everyone here is the winner in their own different way. So applause for all of you. We will be announcing winners each of the training days, so keep. With this, we end our day 3 here and hope to see you 18th, 19th, and 20. Again, the same zeal and enthusiasm. Thank you so much. Thank you so much all for joining us today. Have a good day and keep shining till we meet again tomorrow on the platform of Edunext International Conference. Take care all. Have a good night. Shabina, I Yes, request ma'am. you to please announce for day 2 and day 3 as well. You can see it on the screen. Yes. That's for There day are 2 and day 3. okay. So we have these winner from day 2 and day 3. Okay, let me announce the winners from day 2. Iram Nasir from Citizens Public Secondary School. Amrina Khan from Nasra School. Sumaira Ajaz from Army Public School. Shagufta Shoaib from Happy Home School. Amina Zaidi, Academus International School. Parvez Raza University of Sindh Jamshoro. Farhana Imran from DHACSS School. Iram Akhtar from the Spirit School. Shaista Abbas. Serena Tawfiq Damani. Sana Aisha Sheikh from Ikra Project. Sayyida Abiha Fatima from Orchard Grammar School. So everyone is the winner. Congratulations to all, to winners and to our audience also. So here Thank are you the so winners. much, Shabina, for a lovely hosting today. And we would like you Welcome, to ma'am, to give me please chance. say goodbye to our audience, and we end our day today. Thank you so much, Shabina. Thank you so much. Take care and goodbye.